Take it in. Give for your friend. And make him feel better. Hare Krishna. Let's chant a little bit. Purify the heart and consciousness. We are the Hare Krishnas. हमें हरे कृष्णा Trying to do. प्रयास कर रहे हैं. Krishna. She wants Brother Bob. Looking for Bob. She's looking for Uncle Bob. उनके पास जाना चाहते हैं. That's all. बस इतना ही करना है. When she starts crashing things down, we change the program. जब वो चीजों को तोड़ना शुरू करेगी तो हम अपनी कार्यक्रम बदलेंगे. Shishi Goli Jagannath Baladev, ladies and Baladev. Looks very nice. बहुत अच्छा दिख रहा है. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Govinda Swami Nityanamine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate
Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajika Shishimad Gogovinda Swami Shilgurudev Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajika Shishimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajika Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Ramsikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ganadha Shivasri Shri Gaur Bhaktivinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis Ki Shri Shri Radha Gopinath Ki Shri Shri Radha Gopal Ju Ki Shri Shri Radha Madhava Ki Premanam Sankirtan Jagya Ki Gantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Gaur Premanande All glories to the simple devotees All glories to the simple devotees All glories to the simple devotees All glories to Shri Guru Shri Guru Dharmanjana Should we continue our discussion? How did we get here is an interesting question. Didn't it start off by our friend who was saying that we were being too pessimistic? ये वहाँ से शुरुआत हुई थी जब हमारे एक मित्र आए तो उन्होंने कहा था हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें कर रहे हैं. We were talking about Krishna telling the world, material world, is a temporary, miserable place. हम बातें कर रहे थे कृष्ण बताते हैं ये जगत अनित्य और कष्टों से भरा जगह है. And it has so many different type of misery and suffering here. अलग-अलग तरह के दुख और कष्ट यहाँ मौजूद हैं. And birth, death, disease, and old age, all of this suffering is going on there. जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सारा दुख हमेशा चलता रहता है. And why that was so important? Because we're unnaturally unattracted to Krishna, being in diseased spiritual position. और क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हम अस्वाभाविक रूप से अनाकर्षित हैं कृष्ण की तरफ हमारी बीमार स्थिति की वजह से. So we're talking about motivation. What will motivate us to take advantage of this information? तो हम उसकी बात कर रहे थे कौन सी चीज हमें प्रेरणा देगी कि हम इस जानकारी को गंभीरता से लें. Krishna's devotees, the process, the chanting of the holy name, everything is trying to attract us towards Krishna. कृष्णा के भक्त, भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन, ये सब हमें कृष्ण की तरफ आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं. And we're not so attracted. लेकिन हम उतने आकर्षित नहीं हो रहे हैं. Last night we were talking to some devotees. They're not here, right? पिछली रात हम कुछ भक्तों से बातचीत कर रहे थे. They left. So just a little story. एक छोटी सी कहानी. Make this very obvious to you. तो आपके सामने बहुत बात जाहिर हो जाएगी. So we were talking that Madhav's son, I think he wants to go maybe be an officer in the military or something like that. हमने बात कर रहे थे कि वो माधव जो थे उनके बेटे सेना में भर्ती होना चाहते हैं. And he's like a mathematician, and he has some technical mind like this, you know. और वो एक तरह के गणितज्ञ या किसी तकनीकी दिमाग है उनका. So I said, oh, you should talk to Gopal. मैंने कहा आपको गोपाल से बात करनी चाहिए थोड़ी. Right? And they don't know because everything being translated. और उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सारी चीजों को अनुवाद किया जा रहा था. But when they heard Gopal, they all started like smiling, like so happily. लेकिन जैसे उन्होंने सुना गोपाल तो इतनी खुशी से वो मुस्कुराने लगे. And I was thinking maybe they already talked to him. और मुझे ऐसा लगा शायद वो लोग उनसे पहले ही बात कर चुके हैं. So they were just saying, oh, that's interesting. We already talked to him, and Maharaja is telling the same thing. I thought they were going to say like that. तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि हम लोग उनसे पहले ही बात कर चुके हैं और महाराज हमें उनसे ही बात करने के लिए कह रहे थे. मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात होने वाली है. And because of Gopal's name, they were too happy. It was confusing to me. You know? और गोपाल के नाम से वो इतने खुश हो गए तो मैं थोड़ा और भी भ्रमित होने लगा. No offense. But how can this whole family spontaneously be happy just by the mere mention of Gopal's name? कैसे पूरा परिवार जो है गोपाल का नाम लेते इतना खुश हो गया? तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये बात. So something wasn't lining up properly there. तो कुछ चीजें जो है सही से समझ नहीं आ रही थी.
Then I asked, well, why are they so happy and smiling? तो मैंने पूछा ये इतने खुश क्यों हैं, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? And they said, because you said Gopal name. क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि अब क्योंकि आपने गोपाल का नाम लिया, Like Gopal. गोपाल का. And it was so natural and so spontaneous and so much love and affection and so much happiness just hearing Krishna's name, just hearing Gopal's name. तो इतना स्वाभाविक था, इतने प्राकृतिक तरीके से वो मुस्कुराने लगे, खुश हुए केवल गोपाल का नाम सुनकर. And because they're so simple, क्योंकि वो बहुत they सरल have है some love and affection, attraction to Gopal. और उनको कुछ प्रेम स्नेह आकर्षण है गोपाल के Just प्रति. the mere mention of Gopal name, केवल गोपाल का नाम they लेने like से became effulgent. वो पूरी तरह से प्रकाश में हो गए. And ऐसा they हुआ became है. so joyful, happy, it's just like automatically, naturally coming. और वो इतने खुश हुए कि स्वाभाविक रूप से उनके अंदर से वो खुशी बाहर आ गई थी. And I said, we said that's devotee. और मैंने कहा ये होता That's a है natural attraction. ये स्वाभाविक आकर्षण And I है. was telling David afterward, I feel embarrassed. और देवी को उसके बाद मैं बता रहा था, मुझे शर्म आ रही थी इसके बाद. When we hear Gopal name, are we just like open-heartedly, like so attracted and so blissful and happy, and does it make your whole life happy, joyful? जब हम Just गोपाल by का the mere mention of the Lord's name. तो हम जब गोपाल का नाम सुनते हैं तब क्या हम इस तरह से सुखी आनंदित होते हैं, हमारा ऐसा लगता है पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, इस तरह से क्या हम अनुभव करते हैं. So that made my whole day. तो वो मेरा पूरा बात ने मेरे पूरे दिन Because का I got to see that this natural attraction and happiness thinking about the Lord and His name. तो मैंने देखा कि बहुत स्वाभाविक आकर्षण है और सुख है भगवान के नाम के स्मरण में भी. And so this is the way that Krishna is trying to attract us. और ये वो तरीका है जिसके माध्यम से कृष्ण हमें आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. But we're not so attracted लेकिन हम उतने आकर्षित नहीं होते because of this jaundice spiritual disease condition. क्योंकि ये इस बीमारी पीलिया आध्यात्मिक बीमारी की वजह से. And because that's not motivating us, और क्योंकि ये हमें अब प्रेरित नहीं कर रहा है, then all of these threefold miseries and the misery of the material world that Krishna designed it for, then that has to somehow or other motivate us. तो किसी तरह से तीन तरह के कष्ट और ये भौतिक जगत जो कृष्ण ने बनाया है ये हमें किसी तरह से प्रेरित करेगा. So that's the sad reality of our condition. तो That ये we need to be punished to be attracted to somebody who loves us and trying to help us. तो ये हमारी बुरी सच्चाई है कि हमें दंड लेना पड़ रहा है, मार खानी पड़ रही है उनके प्रति प्रेम पाने के लिए जो हमसे प्रेम करते हैं. So I was just a little lamenting that unfortunately this is what it takes for us. But anyway, this Krishna knows what is our condition. मैंने कहा दुर्भाग्य से ये शोक करने वाली बात है कि हमें इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरह से ये कृष्ण के प्रति हमें आकर्षित करेगा. And my Gurudev said if Krishna wanted this to be a blissful, happy, permanent place, he would have made it like that. मेरे गुरुदेव बताते थे कि अगर कृष्ण इस जगह को नित्य आनंदमय जगह बनाना चाहते तो इसको बना सकते. It's just not made for that. लेकिन इसका मतलब इसका निर्माण इस तरीके से नहीं You want that, you have to go back to Vaikuntha. अगर आप ऐसी चीज चाहते हैं तो आपको वैकुंठ Or वापस जाना somehow होगा get into Vaikuntha या consciousness. फिर किसी तरह से वैकुंठ की चेतना में आना होगा. Otherwise, Prabhupada said material disease is so much fearfulness, anxiety. प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक रोग इतना सारा भय और चिंताओं से भरा है, Disturbances there. इतनी सारी परेशानियां हैं. But then we got into that topic that although there's so much suffering is here, और फिर हम उस विषय पे चर्चा करने आए कि यद्यपि यहाँ बहुत दुख है, our consciousness is so low हमारी चेतना इतनी निम्न है that we think we're alright. कि हम सोचते हैं हम ठीक हैं. Now, we're not fully surrendered to Krishna, we're not relieved from the suffering of our sinful reactions. अगर हमने कृष्ण को पूर्ण शरणागत नहीं किया है तो सारे पाप कर्मों के फलों से हम पूर्ण मुक्त नहीं So हैं. how do we say that we're well situated and we're not perceiving threefold misery? तो कैसे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में है और तीन तरह के कष्टों का हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. Can you sit back there for me? क्या आप पीछे बैठ सकते हैं मेरे लिए? Pray to Krishna. कृष्ण से प्रार्थना कीजिए. He's disturbed, so he's disturbing वो me. परेशान है तो मुझे परेशान कर रहा है. So I cannot peacefully speak. तो मैं शांति से बोल नहीं सकता. I sit over here. Yeah, I need maybe. some positive vibrations. मुझे कोई सकारात्मक तरंग चाहिए. Okay. ठीक है. That may help me a little better. थोड़ा मेरी मदद कर पाएगा. Are you positive? क्या आप Our सकारात्मक? friend said don't be pessimistic, be हमारे positive. दोस्त ने कहा था नकारात्मक मत होइएगा, सकारात्मक रहिए. Because there's a solution, क्योंकि ये समाधान है. right? But we don't know we need the solution. लेकिन हमें पता नहीं है हमें इस That's समाधान the की problem. जरूरत है. ये हमारी समस्या है. We think everything's fine, I'm managing, it's alright, I'm figuring it out, I'm reasonably happy.
हम सोचते हैं हम ठीक हैं, हम ठीक ठाक व्यवस्थित कर रहे हैं और मैं ठीक ठाक सुखी भी हूँ। So that means Prabhupada was, we read all those verses of Prabhupada, said that means you're an animal consciousness. हमने और जितने श्लोक पढ़े, प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप पशु की चेतना, The dogs, camels, asses, सुअर, कुत्ते, they cannot गधे, perceive their suffering condition. ये अपने दुख की स्थिति को समझ नहीं पाते। They're not inquiring, why am I suffering? वो जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं क्यों वो दुख में है। It says the human form of life is to ask these questions. कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है इन प्रश्नों को उठाने के लिए। Why am I being forced to suffer? क्यों मुझे जबरदस्ती दुख Why so much anxiety? Why so much disturbance? क्यों Why इतनी so much चिंता, क्यों इतनी reaction? परेशानी, क्यों इतने पाप करने के फल मुझे मिल रहे हैं? Right? What's the purpose of my life? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या Why है? am I here? Why am I born in that family? Why am I in this situation? इस परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ? इस स्थिति में क्यों मौजूद हूँ? What's the goal, purpose and goal of my life? What's the purpose of the human form of life? मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? And then how do you get free from the suffering condition? Okay, I'm suffering. I acknowledge that. I understand that. Why? And then what is the relief? How do you get out of that? मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं दुख में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ और इसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन क्यों हूँ मैं? कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ? I was reading, Prabhupada said, if you're a third or fourth class man, then you cannot perceive your suffering condition. You won't look for a solution. You don't need a guru. प्रभुपाद बताते हैं आप तीसरे या चौथे श्रेणी के अगर आदमी है तो अपने दुखों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको गुरु की कोई Guru जरूरत is नहीं। for a high class person who's intelligent enough to understand and ask these questions. तो गुरु ऐसे उन्नत श्रेणी के लोगों के लिए हैं जो बुद्धिमान हैं और इस तरह के बुद्धिमानी वाले प्रश्न उठा सकते हैं And who wants to find a solution और जो समाधान ढूंढना to चाहते हैं those problems, the sufferings of the life. अपने जीवन के परेशानियों और दुखों का। So that's why the acharyas are always starting with what is material world, what is material conditioning, right? How we're suffering. Because if we don't come to realize that, we're not going to look for a solution. इसलिए आचार्य जब सबसे पहले आते हैं तो वो हमें बताने का प्रयास करते हैं हम किस तरह दुख में स्थिति में हैं और ये जगत क्या है, कैसे हमें यहाँ कष्ट मिल रहा है। अगर हम अपनी समस्याओं को समझेंगे नहीं तो हम गंभीरता से समाधान नहीं ढूंढेंगे। So just, canvassing and promoting the solution to people who don't even know what is the need of the guru, or that we even need a solution, then it's almost meaningless. तो जो उन लोगों का सामने अगर प्रस्ताव रखा जाए कि ये सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जो लोग अपनी समस्याओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जहाँ ये जरूरत नहीं समझ रहे हैं समाधान की, तो क्यों उनको बताया जाएगा ये समाधान? So as Guru Sadhu Shastra, they're trying to purify us enough to realize the reality of our situation. तो गुरु साधु शास्त्र हमें शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं पर्याप्त रूप में कि हम अपने वर्तमान में दुखमय स्थिति को महसूस कर पाएं। Because all of this pride and arrogance and lust and all of the thing is just covering our good intelligence. क्योंकि ये दम्भ, ये अकड़, ये काम, इसने हमारी अच्छी बुद्धि को ढक कर रखा है। The false ego, we cannot understand correctly. We cannot see Krishna with the false ego. तो मिथ्या अहंकार में हम सही तरीके से श्रवण नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, कृष्ण को समझ नहीं सकते। Krishna says you're lost. तो कृष्ण कहते हैं तुम भटके And we don't think we're lost. लेकिन हम ये सोचते नहीं हम That's भटके। another question. ये एक और प्रश्न है। I'm not lost. I don't need to be saved. मैं भटका नहीं हूँ, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। I'm all right. I'm doing all right. मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। And then the pride makes us think we're very nicely situated in spiritual life. और दम्भ हमें ये Understood everything. सोचने को मजबूर करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में है और मैंने सारी Maybe चीजों not को समझ everything, लिया है। but pretty much figured out, right, Srivas? सारी चीजों को नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें समझ ली इसके बाद। And then you throw some sentimentalism in there, so you feel some emotion, some sentimental, spiritual emotion. और उसमें कुछ आध्यात्मिक भावनाएं हम डाल देते हैं तो हम महसूस करते हैं ये हमारी आध्यात्मिक जीवन है। So we're thinking it's spiritual. हम सोचते हैं ये आध्यात्मिक है। Now we're feeling that it's spiritual. अब हम अनुभव भी कर रहे हैं कि आध्यात्मिक है। And our pride and false ego is saying that's why I'm confident that it's spiritual. और हमारे दम्भ मिथ्या अहंकार में हम कह रहे हैं इसीलिए मुझे आत्मविश्वास है कि ये आध्यात्मिक So है। all of this thing is coming from Maya. तो ये सब कुछ माया से आ रहा है। It's gross and subtle misconception and contamination, and we can't even realize it. तो स्थूल या सूक्ष्म तरह की गलतफहमी या कलमस है, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। And Krishna knows that. और कृष्ण इस बात को The जानते हैं। Guru knows that. गुरु इस बात को So जानते हैं। he's trying to purify us, and he's trying to bring us to the reality of our position and condition. तो हमें शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी असल स्थिति को हमारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं।
And if we can come to that and look for real solution, Prabhupada said, then you need a guru. और अगर हम ये समाधान नहीं कर पाते हैं, तब हमें गुरु की जरूरत पड़ती है. And then we discussed about, who is the guru, how they're authorized to be a guru, what is the process of understanding guru. और हमने बात की कि गुरु कौन होते हैं और क्या प्रक्रिया है गुरु को समझ पाने का. What is the qualification of the guru? गुरु की क्या योग्यताएं हैं. But if we don't realize what is the need of the guru, then who cares who's authorized, who's not? लेकिन अगर हम ये महसूस ही नहीं कर रहे हमें गुरु की जरूरत है, तो क्या फर्क पड़ता है किसे अधिकार मिला है किसे अधिकार नहीं मिला. He's authorized, not authorized, already authorized, it doesn't matter. None of that conversation matters. कि इनको अधिकार मिला है उनको अधिकार नहीं मिला है, कुछ को पहले ही अधिकार मिल चुका है, ये सारी चर्चाओं का कोई अर्थ ही नहीं है. It only matters when we want a real solution. ये तभी मायने रखता है जब हम असल समाधान And ढूंढना we're चाहते ready हैं to fully surrender to find that solution. और हम पूर्ण शरणागत करने के लिए तैयार हैं उस समाधान को ढूंढने के लिए. Then we need a guru. तब हमें गुरु की जरूरत है. Then we have to understand what are the qualifications of a bona fide guru. तब हमें समझने की जरूरत है प्रमाणिक गुरु की क्या योग्यताएं होती हैं. And what benefit we get by associating and hearing from bona fide guru. और हमें क्या लाभ मिल सकता है प्रमाणिक गुरु का संग करके और उनसे श्रवण करके. And in that way we can develop intelligence and faith enough to surrender to Krishna and surrender to the guru. और इस तरह से हमें पर्याप्त बुद्धि मिलेगी, श्रद्धा मिलेगी कि हम गुरु को और कृष्ण को शरणागत कर पाएंगे. Is that pretty much how we got to this point? क्या इसी तरह से हम इस बात तक नहीं पहुंचे थे? Because different devotees are saying, like, how did we get here? Why are we talking about this? It's all process, right? तो अलग-अलग हम बात कर रहे थे कि इस चर्चा में So हम just कैसे आए. following this train of thought and this discussion and this process to try to put it into a context. तो हम प्रयास कर रहे हैं इन सारी बातों को एक सीधी रेखा में लाने के लिए ताकि हम इसका एक जानकारी ले सकें हम क्यों इन सारी चर्चाएं कर रहे हैं. So we had on the signboard, the mystery of Guru Tattva. We're going to preach in some place, and everyone's like, "What's the mystery of Guru Tattva?" Like somehow those words are like fascinating to some people. तो हम जो है कहीं और प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं और हमने साइन बोर्ड्स बनाए हैं उसमें जो है हमने शीर्षक कुछ लिखे हैं कि गुरु तत्व का क्या रहस्य है. और इन बातों से इन शब्दों से लोग अपने को बहुत मजेदार बातें लग रही है कि उन्हें ये सब बातें पहले कभी सुनी नहीं. So how Krishna in the art is making them feel like that sounds like some interesting topic. तो कैसे कृष्ण उनको हृदय में ये अनुभव करा रहे हैं कि ये कितना रुचिकर विषय है, दिलचस्प विषय है. Right? Who's making them think like, oh, that would be a very fascinating, interesting topic? कौन उनको ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि ये बहुत मजेदार और बहुत दिलचस्प विषय होगा. Someone's like prompting them, isn't it? कोई उनको अंदर से प्रेरणा दे रहा है. So we'll go and we'll try to present many of these same things, hopefully in a different way, so you don't get bored. हम वहाँ जाएंगे और इन्हीं बातों को हम वहाँ भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे दूसरे तरीकों से ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरियत न लगे. Because you guys are so, advanced and you want ever increasing information. क्योंकि आप सभी बहुत उन्नत लोग हैं और आपको हमेशा जो है बढ़ता हुआ जानकारी चाहिए कुछ और ज़्यादा. So with all of this in mind, right? Understand? So with all of this in mind, I'm just continuing in my reading and just trying to understand these topics for myself so I can also share with you. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आगे और पढ़ना जारी रख रहा हूँ ताकि मैं स्वयं इन बातों को समझ सकूँ और आप लोगों को भी मदद कर सकूँ आप भी इन बातों को समझ पाएं. And it's nice because Prabhupada is quoting Shastra, quoting the authority. और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रभुपाद यहाँ शास्त्र अधिकारियों की बात कह रहे हैं. And at the same way, he's explaining it practically. और साथ ही साथ वो व्यावहारिक रूप से उसको व्याख्या भी We कर can रहे try to understand it. हैं. तो हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं. By his expert analogies. उनके निपुण उदाहरणों के माध्यम से. As well as how Prabhupada just sees his life and his life's experience through the teachings of the Shastra. प्रभुपाद ने स्वयं अपने जीवन में ये सारी चीजों का अनुभव किया शास्त्र के माध्यम से. So this is a lecture on Bhagavad Gita 216, August 22, 73 in London. तो ये भगवद गीता 216 अगस्त 22 1973 लंदन में दिया गया. I'm just picking up in this discussion. तो इस चर्चा के बीच में से मैं कुछ बातें बता I रहा was हूँ. discussing about the 9 kinds of devotional service, beginning with hearing and chanting. Why is this everywhere? प्रभुपाद जो है नवदा भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो शुरू होता है श्रवण से. तो ये सभी जगह क्यों बात हो रही है इसी चीज की? Because it's first and most important aspect of devotional service. क्योंकि ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग है भक्ति का.
then Prabhupada is quoting that Shrama Evi Kevalam from Srimad Bhagavatam 128. तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं श्रम एव केवलम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 8वां श्लोक. And that verse is Dhamma Svanushtita Pumsam Vishvaksena Katasoya Lokpadaya Yadivatem Shrama Eva Hi Kevalam. The verse says the occupational activities that a person performs according to their own nature and position. श्लोक का अर्थ है कोई अपने स्वभाव के आधार पे जिस तरह के धर्म का पालन करता है. So our position in society and our psychophysical nature, we're acting, performing activity based on that. तो हम समाज में हमारा जो स्थान है और जो हमारा स्वभाव है उसके आधार पे हम किसी तरह के धर्म का पालन कर रहे हैं. वर्ण आश्रम. It's so much useless labor if all of that activity does not prompt you to be attracted to hearing and chanting about Krishna. ये सारे कार्य केवल श्रम है अगर ये आपको कृष्णा के बारे में श्रवण कीर्तन के लिए आकर्षित नहीं करता. So we're doing all of that and it does not make us attracted to hearing and chanting about Krishna, then it's just useless labor. तो अगर आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं लेकिन वो आपको कृष्णा के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए आकर्षित नहीं कर रहा है तो ये सब केवल बेकार की मेहनत है. And Prabhupada says this is just limited to personal and extended. Okay, bye bye. Bye bye. चलो जाओ. I love kids. मेरे बच्चों से बहुत प्रेम है. I love all spirit souls. सभी जीवात्माएं. Not when you're talking philosophy. जब वो सिद्धांत बात करते हैं तब नहीं. And the ladies, they see a cute, chubby kid, everyone's like, oh, they want to like pinch them. महिलाओं का जब कोई क्यूट और अच्छा सा बच्चा दिखता है तो वो लोग उनको छूने लगते हैं. I told you in Thailand, right, we were giving that class and everyone's listening so nicely and this like really nice looking baby, chubby came in there, beautiful kid. And everybody, even the men, what to speak of all the matas, they're just looking at that baby, you know. एक बार मैं क्लास दे रहा था तालीम में तो वहाँ पर एक क्लास के बीच में एक छोटा सा बच्चा गोल मोल सा बहुत ही सुंदर सा बच्चा आया तो सभी माताजी तो क्या प्रभु भी सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे. I lost everybody in like one moment, you know. एक क्षण में जो है it's like Rishi when he was trying to open the windows and like everybody's just watching Rishi last night. जैसे कल की रात ऋषि जब खिड़की खोल रहे थे सारे लोग उनको ही देख रहे हैं. Like everything had to stop. सब कुछ रुक गया था उस क्षण के लिए. Because everyone was just watching Rishi. सभी लोग केवल ऋषि को देख रहे थे. So I said, you know what? Let's participate in this leela, you know. चलो हम सभी जाते हैं इनकी लीला में भाग लेते हैं. And the rest is history, you know. उसके बाद सबको इतिहास पता है क्या हुआ. So we talked about also desires, material desires, and this all different selfish, extended selfishness there. और ये स्वार्थ और बहुत सारा विस्तृत स्वार्थ है. Related to the body and bodily relations. जो शरीर और शरीर के संबंधों पे आधारित है. And also within the human society. और साथ ही मनुष्य समाज में भी. This is all based on gross bodily comfort. और ये आधारित है स्थूल आरामदायक सुख के. So if we're just doing all this work, all this activity, just for all of that, which is more or less sinful. तो हम इतनी सारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं केवल इस आरामदायक चीज को पाने के लिए, जीवन को पाने के लिए जो असल में naturally it's not going to lead us to be attracted to hearing and chanting about Krishna. और स्वाभाविक रूप से हमें कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए आकर्षित नहीं करेगा. Krishna says your intelligence is splayed out, so your resolute determination and faith to practice devotional service will not manifest itself. कृष्ण बताते हैं आपकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रहेगी तो भक्ति करने की दृढ़ निश्चय आपके अंदर प्रकट नहीं हो पाएगा. So Prabhupada is saying, based on this verse, that you've got a very nice office. तो प्रभुपाद इस श्लोक के आधार बता रहे हैं आपको बहुत सुंदर From a ऑफिस material मिला point है. of view, you have nice business. तो भौतिक दृष्टिकोण से आपका बहुत अच्छा व्यापार है. If you perform that business and office work, nice duty, everything you're doing nicely. अगर ये व्यापार आप बहुत अच्छे से करेंगे, अपने कार्यालय का काम बहुत ही अच्छे से सब कुछ अच्छे से करेंगे. But you have no Krishna consciousness. लेकिन अगर आपके पास कृष्ण भावना हरित नहीं होगा, then you are simply wasting your time. तो आप केवल सरलता से अपने समय की बर्बादी कर And रहे you're laboring hard. और कड़ी मेहनत कर रहे हैं. That's all. बस इतना ही. Shastra says, Shrama eva hi kevalam. You're simply wasting your time
laboring hard like an ass. शास्त्र बताते हैं आप केवल कड़ी मेहनत कर रहे हैं और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। So everyone has to work. तो सभी को कार्य करना होगा। Right? Therefore, Krishna says that this is this distinction between sat and asat. और कृष्ण बताते हैं यही भेद है सत और असत के बीच। So everyone has to work. The art of doing work. How do you do your work but make it sat and not asat? तो सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ये कार्य करने की शैली है कि कैसे आप वो सत बना सकते हैं असत ना बनाने की बजाय। So we have to understand it and we have to preach it. तो हमें इसको समझना होगा और हमें इसका प्रचार भी करना होगा। Otherwise, it's just ordinary business deal. It's just ordinary asat. वरना ये कोई सामान्य बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और ये असत है। From spiritual point of view, Prabhupada said you're just laboring hard and wasting your time. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रभुपाद बता रहे हैं आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। So we should not be very much interested with the asat. तो हमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी असत में नहीं रखनी चाहिए। If we are too much attracted and interested with the asat, then our whole life will be completely spoiled. अगर हम बहुत ज़्यादा आसक्त रहेंगे, आकर्षित रहेंगे असत के प्रति, तो हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। We should be interested with sat. हमें सत में दिलचस्पी रखनी चाहिए। So are we interested with in for sat तो or क्या asat? सत में हमारी रुचि है या असत में? So are we make our life successful or we're just simply wasting our time? तो या तो हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे, केवल समय की बर्बादी करेंगे। Unfortunately, Prabhupada says, especially in Kali Yuga, तो प्रभुपाद बताते हैं दुर्भाग्य से विशेष करके कलियुग में people at the present moment, वर्तमान में मनुष्य and समाज of course this is in 1970s, और ये 1970 की बात है। so people in the present moment, they do not know, तो वर्तमान में मनुष्यों को पता नहीं है neither they can imagine और ना ही वो कल्पना कर सकते हैं that there is some possibility of becoming immortal. कि कोई संभावना है कि अमर बना जा सकता है। So everybody's just interested in this life and trying to enjoy in this life. तो सभी लोगों को इस जीवन में और इसी जीवन में भोग करने में So दिलचस्पी है। human form of life, Vedic culture is preparation for the next life. कहते हैं वैदिक जीवन संस्कृति है तैयारी अगले जन्म के लिए। So who's preparing for the next life? तो कौन अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहा है? Where nobody thinks they're going to die. कोई ये नहीं सोच रहा है कि वो They'll मरने वाला enjoy है। like anything, and then when they're old, then they'll do some spiritual life, and then they'll be prepared to die. पूरा जीवन वो मजे करेंगे और जब बुढ़ापा का समय आएगा तो कुछ आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करके मरने की तैयारी The करेंगे। Prabhupada said the problem with that is death can come any second, any moment. प्रभुपाद बताते हैं समस्या इसमें बस यही है कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। You're going to help your wife take some turn with her, आप अपनी पत्नी की मदद करने वाले हैं बारी-बारी से। all right? Otherwise, why do you take her? Yeah. He's not peaceful because she's not peaceful. वो शांत नहीं है क्योंकि वो माता जी भी शांत नहीं है। So then nobody gets benefit. तो फिर किसी को लाभ नहीं मिलेगा। So go make her peaceful, and then maybe she'll be benefit. और जाकर उनको थोड़ा शांत करिए तो शायद सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। Everyone in Kali Yuga is disturbed. कलियुग में सभी लोग परेशान रहते हैं। Mind is always disturbed. मन हमेशा परेशान रहता है। Right? Mind is always disturbed. मन हमेशा परेशान रहता है। Right? So much suffering is there. इतना सारा दुख है। Everyone's battling with the uncontrolled mind and senses. सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं अनियंत्रित मन और इंद्रिय के साथ। Hankering and lamenting. उत्कंठा कर रहे हैं और शोक कर रहे हैं। So we're not thinking of what is my next life. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा अगला जन्म क्या होने वाला It है। says the human form of life is to prepare for your next life, to elevate your consciousness, to depart and get a better situation in your next life. कहते हैं मनुष्य जीवन अगले जन्म की तैयारी करने के लिए बना है, कैसे अपनी चेतना को उन्नत करके और उन्नत जगह में लेकर जाया जा सकता Who's है। thinking like that? कौन इस तरह से विचार कर रहा है? Very few, probably, right? बहुत कम ही हो सकता है। And Prabhupada said this is a very important point. और बात करें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं।
And that's why Krishna Kirtan, Hari-katha Krishna-katha is so important. और इसलिए कृष्ण कीर्तन, हरि कथा, कृष्ण कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। Otherwise, we cannot purify ourselves from these lower modes of material nature. वरना हम स्वयं को शुद्ध नहीं कर पाएंगे इस प्रकृति के निम्न गुणों We से। cannot get free from bodily concept of life. हम शारीरिक चेतना से मुक्त नहीं हो We पाएंगे। cannot become free from the attachments to the body, bodily relations. शरीर और शरीर के संबंधों के प्रति जो हमारी आसक्तियां हैं, हम उनसे It means मुक्त we नहीं हो cannot पाएंगे। come onto the soul platform. इसका मतलब हम आत्मा के स्तर में नहीं आ पाएंगे। We cannot relate and try to understand what is our eternal relationship with the Lord. हम संबंध नहीं जान पाएंगे हमारा और We भगवान won't का क्या even think संबंध to है, reestablish it. और हम ये नहीं सोच पाएंगे कैसे हम उस संबंध को पुनः पा सकते हैं Even in this life, इस जन्म में ही। what to speak of the next life. तो अगले जन्म का क्या कहना? So it says that in Srimad Bhagavatam, Kirtanat eva Krishnasya mukta sangha paramvrajat. In 12th canto, Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में ये बताया गया है। My dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, the whole thing is faulty. ये राजन कलयुग में सभी कुछ दोषों से भरा हुआ है, There is still one good quality about this age. लेकिन फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण उपलब्ध है। By chanting Hare Krishna Mahamantra, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके one can become purified कोई शुद्ध बन सकता है and free from this material bondage, और इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, and then be promoted to the transcendental kingdom. और उसे भगवान के दिव्य धाम में So that's the प्रवेश point कर of सकता the है। human form of life. तो ये मनुष्य जीवन का This अर्थ is है। the Yuga Dharma और in ये this युग- age. इस युग का युग धर्म It's है। simplified program. ये बहुत ही सरल कार्यक्रम Associate है। with devotees, भक्तों का संग कीजिए, hear and chant about Krishna, श्रवण कीर्तन कीजिए कृष्ण के बारे purify your में, अपनी consciousness, चेतना को शुद्ध कीजिए gradually develop transcendental faith and और intelligence, धीरे धीरे दिव्य श्रद्धा और दिव्य बुद्धि and this attraction and attachment for body, bodily relations, material bondage will become decreased. और आकर्षण और आसक्तियां भौतिक संबंधों और अपने शरीर के प्रति कम होने लगेंगे। All this tamagun, rajagun, all sinful desires, sinful activities, sinful reaction will be destroyed. सारा तमोगुण, रजोगुण, पाप कर्म का फल सारा नष्ट हो जाएगा। Now this is very important, this is very interesting because we always say apara, vichar. और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं अपार विचार और तत्व विचार। So here's Prabhupada talking about apara. तो प्रभुपाद यहाँ अपार की बात कर रहे हैं। So I didn't see this before. मैंने पहले ये देखा नहीं था। So it's very interesting. ये बहुत दिलचस्प है। So let's see Prabhupada's description of apara. तो चलिए प्रभुपाद का विवरण देखते हैं अपार के बारे में प्रभुपाद क्या कहते So हैं। param, that means spiritual. परम का मतलब होता है आध्यात्मिक। So there are two kinds. तो दो तरह की होती है, There's para and apara. para और अपार। So para, apara, prakriti. para और अपरा प्रकृति। So apara, prakriti, para prakriti. अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। Or you could say apara bhakti and para bhakti. या आप कह सकते हैं अपार भक्ति या परा भक्ति। So Prabhupada is giving what does apara mean? प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं अपार का अर्थ क्या होता है। Material world is apara. ये भौतिक जगत अपरा है, It's inferior energy. ये अपरा शक्ति है। So it's materialistic, it's maya, तो ये भौतिक है और ये माया है and it's an inferior. Tattva vichar means consideration, right? So apara vichar means an inferior materialistic consideration. तो अपार विचार का मतलब हो गया कि भौतिक और निम्न स्तर का विचार। And besides this, there's another prakriti, another nature, और इसके अलावा दूसरी प्रकृति होती है which is called para. जिसको परा कहा जाता है। And para means spiritual, और परा का मतलब होता है transcendental. आध्यात्मिक, दिव्य। So one nature is apara, it's inferior. तो एक प्रकृति निम्न है, अपारा है, And para means spiritual, transcendental. और परा का मतलब जो आध्यात्मिक है, दिव्य है। So we should not be interested with the apara. तो प्रभुपाद बता रहे हैं हमें अपरा में दिलचस्पी नहीं रखनी We चाहिए, should be interested with the para. हमें परा में दिलचस्पी रखनी चाहिए। Now, what Prabhupada says, why? प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा क्यों? Now that is real life, क्योंकि वो असल जीवन है, or real consideration. असल विचार है, That is the real life.
वो असल जीवन है। So considering both of these, para and apara, superior and inferior. तो परा और अपरा दोनों का जब विचार करेंगे, एक उन्नत है और एक निम्न है। So in that conversation, now he's bringing tattvadashi. तो इस चर्चा में प्रभुपाद अब तत्वदर्शी को लेकर आ रहे हैं। Considering both this idea, para and apara, superior and inferior. तो इस विचार को परा और अपरा, उच्च और निम्न को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी भी Who will study? कौन अध्ययन करेगा? Tattvadashi means those who have realized the truth. तत्वदर्शी का अर्थ है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। That is tattvadashi. ये है तत्वदर्शी। So this is very interesting as you bring apara vichar, tattva vichar together in this conversation. ये बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ परा और अपारा विचार दोनों को एक साथ One लेकर is आ जाना है। inferior, materialistically contaminated, the other is pure and it is superior, transcendental. एक निम्न है, भौतिक है, दूषित है, और दूसरा उच्च है और दिव्य है और आध्यात्मिक है। So tattvadashi does not mean theoretical. तो तत्वदर्शी का मतलब Doesn't mean a par-vichar platform. मौखिक या अपार विचार स्तर नहीं होता। Tattva means Krishna. तत्व का मतलब है कृष्ण, Right? Not theoretical Krishna. मौखिक कृष्ण नहीं, Means real truth, actual truth, असल factual सत्य truth. तत्व में। So one who has realized that truth, tattvadashi, जिसने सत्य को दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, तत्वदर्शी। and Prabhupada says, and then we find this word tattva in various places. Now he's describing what is this tattva vichar. तो प्रभुपाद ने बताया है कि तत्व हम कई जगहों पे इसका हम विवरण देखते हैं और तत्व के बारे में प्रभुपाद बताएंगे। And then Srila Prabhupada is quoting different Bhagavad Gita 7.3, Bhagavad Gita 4.9, where it's talking about yo janati tattvataha. और प्रभुपाद भगवद गीता के अलग-अलग श्लोक, 7वां अध्याय, 3, 4वां अध्याय, 9वां श्लोक, और इसमें से तत्व के बारे में बता रहे हैं। Kaschin veti mam tattvataha. कश्चिन वेति माम तत्वतः। So all of these quotes in Bhagavad Gita where this tattvataha is being presented. तो ये सारे भगवद गीता में श्लोक मौजूद है जहाँ पे तत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Bhakti mama janati yavan yas chasmi tattvataha. So this word tattvataha is very important. तो ये शब्द तत्वतः बहुत ही महत्वपूर्ण है। So apar-vichar, par-vichar, right? अपार विचार और परा विचार। Tattva-vichar means para-vichar. मतलब परा विचार। Right. So this tattva vichar means absolute truth. तो तत्व विचार का अर्थ है परम सत्य Or truth. या सत्य। Tattva means truth. तत्व का मतलब होता है सत्य। In Bhagavad Gita, in the Bhagavata, also in Srimad Bhagavatam 1-2-11, श्रीमद् भागवतम 1-2-11 में Vedanti tattva vidas tattvam. Those who are learned tattvadashi, they understand the absolute truth, fully realize Brahman, Paramatma, and Bhagavan. तो जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्व का साक्षात्कार किया है, वो पूर्ण रूप में ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान को जानते हैं। Not theoretically. मौखिक तरीके से नहीं। Now, who is theoretical and who's realized, that's a different point. तो कौन अब मौखिक है और कौन किसने साक्षात्कार किया है, ये बिल्कुल अलग बात है। And only Krishna can give intelligence and faith ultimately to understand who's theoretically presenting and who's practically realized and presenting. अंततः केवल कृष्ण आपको श्रद्धा और बुद्धि दे सकते हैं, कौन मौखिक रूप से प्रस्तुत कर रहा है और किसने साक्षात्कार पाया है। If you've heard and understand it, then you'll be conversant. It will be a natural conversation. अगर आपने श्रवण किया है और आप उसको साक्षात्कार किया है तो आप बहुत ही स्वाभाविक तरीके से उसको It's not like you're reading something, you're trying to remember it, and then you're theoretically explaining it. Not like that. आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसको मन में याद करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर उसके बाद लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। It's spontaneous. ये अपने आप ही आएगा और बहुत ही प्राकृतिक रूप से automatic. अपने आप ही आएगा। And it's always consistent. और ये हमेशा एक जगह एक जैसा रहेगा। Always consistent. Because that's eternal truth. क्योंकि ये परम सत्य है। And the process is also eternal. और प्रक्रिया भी हमेशा नित्य है। So tattva vidha, तो तत्वविदा, those who are aware of the truth, जो सत्य को जानते हैं, they call this tattva. वो इसे तत्व कहते हैं।
So Gurudev said, we want to understand tattva vichar. We want to understand everything in this consideration of the absolute truth. तो गुरुदेव बताते थे हम सभी तत्व विचार में समझना चाहते हैं Because everything is connected and related to Krishna. क्योंकि सभी कुछ कृष्ण से संबंधित है. So how do we understand all of those things in relation to Krishna, the purpose of it, the creation of it, all of that is tattva vichar. तो कैसे हम सभी चीजों का संबंध कृष्ण के साथ समझ पाएंगे, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या कारण है. Otherwise you look at it and just, oh, those are material elements, that's a particular form that could be used in this way, this can be manufactured like that. It's not an absolute consideration. वरना आप भौतिक रूप किसी चीज का देखेंगे और इसका ये रूप है, इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ऐसे चीज बनाया जा सकता है, ये आप एक तरह का तत्व विचार नहीं है. So this was very revolutionary to me when I first heard that. तो मेरे लिए बहुत ही क्रांतिकारी वाले शब्द थे जब मैंने पहली बार ये पढ़ा. Because we're thinking whatever we're perceiving and understanding, and it's related to Krishna consciousness, that's the truth. क्योंकि हम सोचते हैं जो भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और ये कृष्ण भावना में संबंधित है, यही सत्य है. Because we're talking about Krishna consciousness, so that means it's truth. क्योंकि अगर हम कृष्ण भावनामृत के बारे में बात कर रहे हैं तो अवश्य ये सत्य होगा. But if we're using material mind, intelligence, and senses, are we realizing the truth? लेकिन अगर हम भौतिक मन, बुद्धि, इंद्रिय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम सत्य का दर्शन Are कर we पा रहे even हैं? understanding it properly? क्या हम उसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं? So then we start to understand, oh, there's different considerations. One from absolute platform, one from inferior, apara, materialistic platform. और तब हम समझ पाए एक जो है निम्न अपार स्तर है और दूसरा उच्च और तत्व स्तर है. So then it became very interesting to try to like analyze and understand everything from an absolute point of view. तब ये बहुत दिलचस्प हो गया कि कैसे हम सारी चीजों को तत्व विचार दृष्टिकोण से समझ पाएंगे. So when we would walk around with Srila Govinda Swami, we would just ask him questions like, you know, whatever it was, we'd say, Gurudev, what's the tattva on that, you know? जब भी हम श्री गोविंद से महाराज के साथ घूम रहे होते थे तो कुछ भी चीजें हमारे सामने आती थी, जब हम देखते थे गुरुदेव को हम पूछते थे कि इसके पीछे तत्व क्या है. Because he would say everything is in tattva, everything should be seen and understood from tattva vichar point of view. वो कहते थे सभी चीजों को तत्व विचार दृष्टिकोण से देखना और समझा जाना चाहिए. So we just whatever we're walking around the temple, we just whatever you see, you say, Gurudev, what's the tattva on that? तो हम जब मंदिर में उनके साथ घूम रहे होते थे और कुछ भी चीज हम देखते थे मंदिर में तो कहते थे गुरुदेव इसके पीछे का तत्व क्या है. And then he would say this amazing statement that you never thought about before. और वो कुछ ऐसे अद्भुत वाक्य बताते थे कि आप उसके बारे में कभी आपने सोचा तक नहीं होगा. And then you're like, wow, I could look at that thing, you know, 100,000 years and not come to that realization. तो हम सोचते थे कि अगर हजार साल तक मैं उसको देखता रहूंगा तब भी मैं उस तरीके से नहीं देख पाऊंगा जैसा उन्होंने देखा. So then Prabhupada says, you see, if you hear from Tattvadarshi, then you can see. Gurudev said he'll take off his glasses and he'll put on you, and then you see. So wow, I never saw that before. तो तत्वदर्शी से श्रवण करने का मतलब है कि फिर आप देख पाएंगे. जैसे उनके पास कोई चश्मा होता है, वो अपना चश्मा निकाल कर आपको देंगे, फिर आप जब देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था. And Srila Prabhupada also, when he would walk around, he'll just say, just see, you know, and then he would just see some bird and say, you know, you see how fearful this bird is acting, right? Because of this fearfulness, this is material consciousness, you know. तो जैसे प्रभुपाद भी कई बार सुबह सैर करने के लिए निकल रहे होते थे तो वो देखते थे कोई पक्षी है तो कहते थे देखिए पक्षी के अंदर कितना भय है, किस तरह से वो हमेशा भय में चिंता में रहती है. तो प्रभुपाद इस तरह से व्यवहारिक तरीके से बता रहे होते थे. So before hearing from my spiritual master, I didn't understand this distinction. तो अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करने से पहले मैं ये भेद जान नहीं पाता था. Between theoretical understanding on material platform and absolute understanding with intelligence and purified mind and senses by mercy of Guru Krishna. कि मैं क्या जो है भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं है और कौन जो है शुद्ध बुद्धि मन इंद्रिय से जो चीजें हम समझ पाते हैं जो आध्यात्मिक है. Then it became like an obsession. तो ये जो है मुझे हमेशा प्रेरित करता था. Like every time I was reading, I was like, okay, where's the tattva vichar, you know? जब भी मैं पढ़ता था I was look at this from absolute perspective. मैं ढूंढने का प्रयास करता था इसके तत्व कहाँ है, इसमें तत्व विचार से कैसे मैं इसको समझ पाऊंगा. And everything we would say, Gurudev, what's the tattva on that? जो भी चीज हम देखते थे हम गुरुदेव को पूछते थे गुरुदेव इसके पीछे का तत्व क्या है. It was kind of fun. It was like a little kid saying, Daddy, what's that? You know,
well, tell me about that, right? We're like little kids. Good day, what's the tattva on that? You know, So you let's say- smile and just say some wild, amazing statement that you never would have thought about, you know. तो हम इस तरह बच्चों की तरह मजाक करते हैं, जैसे बच्चे अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी वो क्या है, पिताजी वो क्या है, तो गुरुदेव और हम गुरुदेव से पूछते थे, गुरुदेव इसके पीछे का तत्व क्या है, और वो ऐसे अंदाज में हमें बताते थे ऐसी चीजें हैं बिल्कुल जो हम कभी सोचा ही नहीं था हमने. So like little kids, like just being taught like a new word, you know, like a new concept. जैसे And छोटे then how do बच्चों you को see how that's manifesting and working everywhere? जैसे छोटे बच्चों को कुछ नए शब्द सिखाए जा रहे हैं, कुछ नई चीजें सिखाई जा रही है, कैसे आप उन चीजों को समझ सकते हैं, कैसे वो चीजें प्रकट हैं. So what happened was after so different years hearing and studying and from him and always getting an absolute Tattva Vichar presentation, that's just the way that you will actually see and understand everything. तो इतने सालों से उनसे श्रवण करने के बाद और चीजों को तत्व विचार तरीके से समझने के बाद आप जब भी देखेंगे जो चीजों को तत्व विचार दृष्टिकोण से आप देखने का प्रयास करेंगे. So Gurudev trained us to understand it from this Tattva Vichar platform. तो गुरुदेव ने हमें प्रशिक्षण दिया कि कैसे हम इस तत्व विचार स्तर में चीजों को देख पाए, समझ पाए. And Prabhupada said the absolute truth, the transcendental presentation, the whole thing is Tattva Vichar platform. Which part of it is inferior and material? तो प्रभु बताते हैं परम सत्य और उससे संबंधित जितनी भी सारी चीजें हैं सब परम सत्य दिव्य स्तर पर आधारित हैं, तत्व विचार में है, कोई भी भौतिक स्तर Even पे. Prabhupada's so-called apar vichar presentation, it's not apar vichar. यहाँ तक कि प्रभुपाद कई बार अपार विचार प्रस्तुति दे रहे होते थे, He लेकिन फिर भी वो cannot अपार speak विचार apar vichar. वो अपार विचार बात करेंगे ही नहीं कभी. But what people are perceiving it as apar लेकिन vichar. लोग उसको देख रहे थे अपार विचार दृष्टिकोण से. That's why Gurudev said it just needs further explanation. इसलिए गुरुदेव ने बताया इसको और ज्यादा विवरण या व्याख्या करने की जरूरत है. So this is the training. If you don't hear from Tattva Guru, how you'll be able to make that distinction and to have that kind of realization and faith and understanding. तो अगर आपको ये प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तत्वविद गुरु से श्रवण करके तो आपको कैसे ये श्रद्धा मिल पाएगी या ऐसे साक्षात्कार मिल पाएंगे कि आप इस दृष्टिकोण से समझ पाएंगे. So without doing submissive or reception from Tattva Guru, nobody can understand it. तो अगर आप विनीत भाव से श्रवण नहीं करेंगे तत्वविद गुरु से तो कोई भी इन सारी चीजों को समझ नहीं पाएगा. And before hearing from such a bona fide guru, I was reading the books religiously for years. I never saw all of it and understood all of those things. और अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करने से पहले मैं इन सारी किताबों को बहुत ही धार्मिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करता, लेकिन कभी मैं उन चीजों को ना तो देख पाया ना समझ पाया. Even sometimes Gurudev would say, yeah, Prabhupada says right here. And I would be like, where does Prabhupada say that? You know, I'd be like kind of looking at the book. I got to see this to believe this, you know. तो कई बार मेरे गुरुदेव कहा करते प्रभुपाद ने यहाँ पे ये बात कही है बिल्कुल, और मैं सोचता था कहाँ ये बात कही है, और फिर मैं किताबों को ढूंढने का प्रयास करता था कि प्रभुपाद ने ये बातें कहाँ पे कही है. And Gurudev would like play with us. Yeah, it's right here. और फिर गुरुदेव हमारे साथ खेल खेलते थे, ये देखो यहीं पे तो लिखा है, Very clear. बहुत साफ साफ लिखा है. And he takes his glasses off, you know, look at it with these glasses, and it's like right in front of your face. और फिर वो अपने चश्मे उतार के हमें देते थे, और हम जब उसमें चश्मे से देखते थे तो ये हमारे चेहरे के बिल्कुल सामने उठ कर आता था. Sometimes I'd read it again and again, like how I never saw that. और कभी मैं बार बार उसको पढ़ता था, मैं सोचता था ये मैंने पहले कभी देखा How I क्यों never नहीं, understood that. कभी मैंने इसको समझा क्यों नहीं पहले. Then I understood that's what revealed scripture means. तब मैं समझ पाया कि प्रकाशित शास्त्र ज्ञान क्या होता It's है. based on mercy. ये कृपा पे आधारित है. Mercy of the Guru, mercy of Krishna, mercy of the Shastra. गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा और शास्त्र की कृपा. If you try to understand it without mercy, and depending on that mercy, nobody can see all of those things. It's hidden. अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे बिना कृपा के ऊपर, कृपा पे निर्भर हुए, कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा. Even though it's plain as day, हो सकता है ये वहाँ पे मौजूद हो, but if we're not doing it right way, it will remain covered. लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये हमारे सामने ढका रहेगा. So this is everything is based on mercy. सब कुछ कृपा पे आधारित है. So if we can get Krishna's mercy to get Tattva Guru, then Krishna will reveal. Tattva means Krishna. Krishna will reveal himself through Tattva Guru. That means that Guru knows Tattva. It means he knows Krishna. तो अगर हमें कृष्ण की कृपा से तत्वविद गुरु मिलते हैं, उनसे श्रवण करने के बाद हमें तत्व मिलेगा, यानी कि कृष्ण मिलेंगे. तत्व का मतलब ही होता है कृष्ण, और तत्वविद गुरु कृष्ण को जानते हैं. So I'm a Tattva Guru, and then I just theoretically explain it to you, and then I don't practically realize it. You're talking about that kind of Guru. तो मैं कहूँगा हाँ मैं तत्वदर्शी गुरु हूँ, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से आपको बता नहीं
पा रहा हूँ, मौखिक रूप से बता रहा हूँ, तो क्या इस तरह के तत्वदर्शी गुरु की आप बात कर रहे हैं? So one who can explain, one who heard it and understands it by the mercy of his guru, तो only he can explain it to you. तो जिसने श्रवण किया है और समझा है अपनी गुरु की कृपा से, केवल वही आपको ये बातें समझा सकता है। And then when you can see something that you never saw before, और जब कुछ आप ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने पहले कभी देखी ना हो, and realize things that you never even thought of before, और ऐसा अनुभव पाएंगे उसमें से जो आपने पहले कभी जीवन में and अनुभव ही it's ना किया there directly, Guru Sadhu Shastra. और ये सीधे सीधे वहाँ मौजूद है, गुरु साधु शास्त्र। So how did that practically, undeniably manifest itself? तो कैसे व्यवहारिक रूप से, जिसको आप कभी नकार नहीं सकते, स्वयं कैसे आपके सामने प्रकट होगा? Without Krishna's mercy and the Guru's mercy, Shastra's mercy, you would never see that, understand that, or realize that there's even another consideration, another way of looking at it. तो बिना गुरु की कृपा के और कृष्ण की कृपा के, शास्त्र की कृपा पे, ना तो आप उसको देख पाएंगे, कभी समझ पाएंगे, ना साक्षात्कार कब कर पाएंगे। बिल्कुल ही अलग ही तरीका है उसको देख पाने So का। Prabhupada said you judge by the results. तो बात कहते हैं आप फल के आधार What पे is the निर्णय results करें and the effect of hearing from that personality? कि उस व्यक्ति से श्रवण करने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन है, क्या प्रभाव हुआ, And then it's undeniable. और ये कोई नकार नहीं पाएगा जब अंदर प्रभाव दिखेंगे। I didn't understand any of this before I heard from Srila Govinda Swami. मैं ये सारी में से कोई बातें समझ नहीं पाता था श्रील गौरव हमारे से सुनने से And by associating hearing from him, by his mercy, he let me put on his special glasses, and then I could see that. और उनका संग करके, उनसे श्रवण करके, उनकी कृपा से उन्होंने मुझे अपने चश्मे दिए और उस चश्मों से मैं इन सारी चीजों को देख पाया। Then I just went to prospecting for gold, looking for the tattvas. और उसके बाद मैं इस तरह सोने की खोज करने, तत्व की खोज करने में What's लग the गया tattva on that? कि तत्व क्या है इसमें। So what happens is when you see it and understand it from Tattva Vichar point of view, you're going to present it that way, the same way that your Tattva Guru presented it to you. तो क्या होगा अगर आप तत्व विचार दृष्टिकोण से चीजों को समझ पाएंगे, जब आप तत्व विचार गुरु से आपने श्रवण किया है, तो आप उसको तत्व विचार में ही प्रस्तुत भी करेंगे लोगों के So सामने। how these people are saying we never heard this before? तो कैसे ये सारे लोग कह रहे हैं हमने ये बातें पहले This कभी is सुनी like नहीं, another philosophy. सुनने में कुछ नया ही सिद्धांत लग रहा है। Even they're saying, this is like not really part of the parampara. यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे परंपरा में It's नहीं, like Gaudiya Math, or it's some other. It's not Prabhupada. ये गौड़िया मठ या किसी और जगह से गया है, ये प्रभुपाद की बातें नहीं है। And then you say, well, everything we're saying is from Prabhupada. और फिर हम कहते हैं जो भी हम कह रहे हैं सारा कुछ प्रभुपाद की बातें हैं। How do you say it's not from Prabhupada? आप कैसे कह रहे हैं कि ये प्रभुपाद से नहीं है बात? That's why I got a little bit not happy by someone saying, well, after 3 hours of just, presenting all of Prabhupada's, quotes, and they're saying, well, are you part of ISKCON? और इसलिए बात में मुझे बहुत दुखी किया कि 3 घंटे प्रभुपाद की बातों से प्रचार करने के बाद वो मुझसे सवाल उठाते हैं कि आप ISKCON के भाग हैं या नहीं। I should have said, are the people who you think are part of ISKCON, did they explain it like this? तो मुझे उससे सवाल पूछना चाहिए था, आपको लगता है जो ISKCON के भाग हैं, क्या उनमें से किसी ने भी इस तरह से आपको कोई विवरण दिया है आज तक? Maybe that would have been better than how I answered it. तो हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर होता जिस तरीके से मैंने उनको उत्तर दिया था। Srivas got upset with me. श्रीवास मुझसे नाराज हो जाएंगे, नाराज हो Because he's like the middleman, he's like, what am I supposed to tell him? It's a stupid question. और वो जो है बीच के आदमी है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछा जा रहा है। And then Srivas is like, we'll never hear anything from them again, और श्रीवास सोच रहे हैं कि अब कभी उनसे श्रवण नहीं करेंगे। Another one is gone, एक और चला गया हमारे। That's why I said I'm like bad for business, you know what I mean? मैं कहता हूँ मैं धंधे के लिए बहुत बुरा हूँ। Like if you're doing this for a business, it's like I'm the worst. I cannot help you, अगर आप मेरे साथ व्यापार करेंगे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। That's why I don't expect big crowds, you know what I इसलिए mean? मैं कहता हूँ बड़ी भीड़ की अपेक्षा मत कीजिए यहाँ। So this is proof. तो ये प्रमाण है। The results is undeniable proof. जो फल मिलेंगे वो हम नकार नहीं पाएंगे कभी। So when I was following the system, going through the sadhana, chanting, regular program, reading every day, I saw how far did that get me, and how satisfied am I, and how much have I progressed. तो जब मैंने भी इन नियमों का पालन किया
और जब किया, साधना का पालन किया, हर प्रतिदिन पढ़ाई करता था किताबों की, और ये मुझे कितनी देर तक, कितनी दूर तक लेके आ पाया, कितना मैं संतुष्ट हुआ और कितना मैं भक्ति में प्रगति कर पाया। Just look, we're supposed to be introspective. हमें इस तरह भीतरी छानबीन Not करनी just like चाहिए, blindly following something. बस अंधे की तरह कुछ भी पालन नहीं करते We're रहना चाहिए। following a process, and we should be analyzing what is the effect and the results of that process. तो हम जिस Otherwise, प्रक्रिया- why will you continue to keep going on that way? हम जिस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, हमें व्यावहारिक रूप से देखना होगा, हमें इस प्रक्रिया को पालन करके क्या अनुभव दिख रहा है, क्या लाभ मिल रहा है, वरना क्यों आप उस प्रक्रिया को पालन करते रहेंगे। So I saw how far, as objectively and honest as I could, good, bad, and ugly. I came to some understanding. Okay, where did this get me? How far did I advance by that way? तो पूरी ईमानदारी से जब मैंने ये देखने का प्रयास किया कि मैं इतनी सारी चीजों को करके अच्छा, बुरा या उससे भी बदतर कहाँ तक मैं पहुँच पाया अपने जीवन में। And then the second part of my life was after meeting Srila Govinda Swami. और मेरे जीवन का दूसरा भाग शुरू हुआ जब मैं श्रील गौरविंद महाराज से मिला। And then Gurudev stressing hearing from someone who realizes what's in the books. और गुरुदेव हमेशा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि उनसे श्रवण करना, जिनको अनुभव है, साक्षात्कार है किताबों में क्या बातें लिखी, And who can explain it in a way that you'll be able to realize what he's realizing. और वो इस तरीके से आपके सामने व्याख्या देंगे कि आप वो साक्षात्कार कर पाएंगे जो उन्होंने भी स्वयं साक्षात्कार किया। So I had faith in Srila Prabhupada. तो मुझे श्रद्धा थी श्रील प्रभुपाद, No doubt about it. इसमें कोई संदेह नहीं था। But then I heard from Srila Govinda Swami, who has unflinching faith in Srila Prabhupada. लेकिन जब मैं श्रील गौरविंद महाराज से मैंने सुना तो उनको अटूट श्रद्धा थी श्रील प्रभुपाद में। So if you can associate and hear from persons who have, higher or more complete faith, by their mercy, they can give you that faith. अगर आप ऐसे व्यक्ति से संग करेंगे जिनके पास आपसे ज्यादा और भी कहीं ज्यादा श्रद्धा है, तो उनकी कृपा से वो भी आपको वो श्रद्धा दे सकते हैं। That's what it is. The Hari-katha Krishna-katha, that it's a transmission of faith. और यही है ये प्रक्रिया, हरि कथा कृष्ण कथा, श्रद्धा का दूसरे जगह पहुंचाना It's है। like a download of faith. जैसे जो है श्रद्धा को डाउनलोड किया जा रहा है। Right? So if you can do submissive oral reception अगर आप विनीत भाव से श्रवण कर पाएंगे from bona fide guru, प्रमाणिक गुरु से, he can download his faith to you. तो वो आपके अपनी श्रद्धा आपके भीतर डाल सकते हैं। If you know how to do submissive oral reception, अगर ये आप सीख पाएंगे कैसे विनीत भाव से श्रवण किया जाता you है, have to have good connection. आपको अच्छा संपर्क बनाना होगा, Otherwise, how the download will go completely. वरना कैसे जो है ये डाउनलोड पूरी तरह It'll से जा stop, पाएगा। like wheels will be going. It's like you can't receive the message. It'll just be all different types of obstruction impediments are there. तो वो घूमना शुरू कर देगा कि ये जो है संपर्क सही नहीं है, या पर्याप्त उनके पास रखने की क्षमता नहीं है, तो ये सारी जानकारी दिखाना शुरू कर Krishna देगा। said because of false ego, कृष्ण बताते हैं अपने मिथ्या अहंकार की वजह से different layers of lust and tamogun, rajagun. अलग अलग स्तर के काम है, रजोगुण और तमोगुण से So प्रभावित it's है। not a clear, open, channel, to receive the download. तो पूरा खुला और एकदम साफ रास्ता नहीं है कि वहां तक ये श्रद्धा पहुंच सके। Right? When you find something, you say, "Oh, I will get a download." That means you see there's something valuable there, isn't it? जब आप कुछ देखते हैं कि आपको कुछ अच्छा चीज, कुछ ऐसी चीज देखते हैं, मुझे इसको तो डाउनलोड करना ही चाहिए, And आपको it's पता चलता something है, I don't have in my possession. और ये ऐसी कुछ चीज है जो मेरे पास नहीं है। So, can I download that? Can you send me a copy of that? Right? कहते हैं क्या मैं डाउनलोड कर सकता, क्या मुझे उसका एक कॉपी भेज सकते हैं? I want to have that. I want to have record of that. मुझे वो चाहिए, मुझे वो सारा रिकॉर्ड चाहिए। So the whole process from the Tao Shraddha to Prema is based on faith. तो पूरी प्रक्रिया अदाउ श्रद्धा से लेकर प्रेम तक श्रद्धा पे आधारित है। Every level has certain level of faith, all the way to Krishna Prema. हर एक स्तर का एक विशेष स्तर का श्रद्धा है पूरे कृष्ण प्रेम तक पहुंचने। So it says we should always try to associate with those who have more faith than we have. तो ऐसा कहा जाता है, हमें ऐसा हमेशा संग करना चाहिए उन लोगों का जिनके पास हमसे ज्यादा श्रद्धा है। By their mercy, whatever faith you do have, that's what you can download. That's what you can get. और उनकी कृपा से जितनी श्रद्धा आप डाउनलोड कर सकते हैं उतनी आपको मिल पाएगा। If you have $100 in your pocket, can't say, "Oh, I'm going to give you $5,000." अगर आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपए हैं तो आप किसी को ये नहीं कह सकते मैं आपको 5,000 रुपए दे सकता हूँ। $100, I can give you $100. मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं आपको केवल 100 रुपए दे सकता हूँ। Can't promise more than that. Can't give more than that. तो उससे ज्यादा मैं वादा नहीं कर सकता, ना तो उससे ज्यादा मैं दे सकता हूँ। That's why I said, whatever real faith that you have, just
present that. इसलिए कहते हैं जो असल श्रद्धा है आपके पास केवल उसी को प्रस्तुत कीजिए। So if we have good fortune to associate with Premi Bhakta, तो अगर हमें ऐसा सद्भाग्य मिलता है कि हम प्रेमी भक्त का संग कर पाएं, real Tattvavid Guru, असल तत्वविद गुरु का, Nitya Siddha, नित्य सिद्ध Mahabhagavata, महाभागवत, then everything is there. तो वहाँ सब कुछ मौजूद है उनके पास। All complete absolute faith is there. पूरा पूर्ण श्रद्धा मौजूद है वहाँ। Now it's a question: can we be? Do we deserve it? Can we deserve it? And can we understand the science of being able to get the mercy of that download of faith? तो अब हमारे ऊपर ये comes down to. तो अब हमारे ऊपर ये बात आ जाती है, क्या हम उसके लायक हैं या हम उस प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें वो चीज़ हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने। While I'm fasting, I'm trying to control my mind and senses, and I'm studying the Shastra, and I'm doing the sadhana, right? कि मैं उपवास कर रहा हूँ, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, अपना श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। I'm fighting with my mind and senses. अपने मन इंद्रिय के साथ मुझे युद्ध करना, संघर्ष करना पड़ रहा है। With the Krishna says you're false ego, you're thinking you're doing everything. कृष्ण कहते हैं अपने मिथ्या अहंकार में तुम सोच रहे हो तुम सब कुछ कर रहे हो। Right? It's actually being done by me. लेकिन असल में ये मैं कर रहा हूँ। So if we realize I don't have anything, अगर हम ये अनुभव कर पाते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, but we somehow or other we want to surrender and serve Krishna, the Krishna will know it. और किसी तरह से अगर हम कृष्ण को शरणागत उनकी सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण इस And बात then को He will जानते हैं shower mercy on you और फिर वो हमारे पर कृपा by बरसाएंगे giving you bona fide guru, और आपको एक प्रमाणिक गुरु देंगे and then all the mercy from Krishna will come through the guru. और वो कृष्ण की सारी कृपा उस गुरु के माध्यम से Now आएगी। Krishna prema, only Krishna can give Krishna prema. कृष्ण प्रेम केवल कृष्ण दे सकते हैं, Otherwise, no one can give Krishna prema. वरना कोई भी कृष्ण प्रेम नहीं पा सकता। And if he wants to give Krishna prema, then he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu. और जब वो कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते So हैं। without doing this, without understanding Shrota Parampara, तो जब तक हम श्रोत परंपरा को समझेंगे नहीं, and without Prabhupada catching up that Parampara, Mahaprabhu's Parampara, प्रभुपाद बताते हैं अगर हम महाप्रभु की इस परंपरा को पकड़ेंगे नहीं, if you don't have faith in that, how you'll surrender and do submissive or reception? अगर आपको उसमें श्रद्धा नहीं है तो कैसे आप शरणागत करके वहाँ विनीत भाव से श्रवण You'll करेंगे? be like, okay, I'm sort of surrendered, आप कहेंगे हाँ मैं किसी तरह से sort of शरणागत करूँगा, listening, किसी तरह से मैं श्रवण कर रहा I'm हूँ considering what is he saying. और मैं विचार कर रहा हूँ ये क्या बातें कह I रहे हैं। have my own way of thinking and presenting मेरा that. खुद का तरीका है इसके बारे में सोचने का और इसको प्रस्तुत करने का, That's not submissive or reception. ये विनीत भाव से श्रवण नहीं है। So we're not surrendering and doing submissive or reception because the absolute intelligence and faith that's required to do that, we're not getting that. तो हम शरणागत नहीं कर पा रहे हैं, विनीत भाव से श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमें ये बुद्धि और श्रद्धा नहीं मिल पा रही है कर And पाने why की। are we not receiving that? Because we're not serious. और क्यों हमें ये बुद्धि श्रद्धा नहीं मिल पा रही क्योंकि हम गंभीर नहीं हैं। And why are we not serious? Because we don't have, there's no urgency. और क्यों हम गंभीर नहीं हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत समझ नहीं आ रही है। So Prabhupada said, you don't need a guru. प्रभुपाद कहते हैं तो आपको गुरु की कोई जरूरत नहीं है। So why talk about, surrender and submissive our reception and downloading of faith? Like, what does that mean to you? तो Why क्यों is बात that करना? important to you? तो क्यों बात करना शरणागति के बारे में और विनीत भाव से श्रवण करना और श्रद्धा को डाउनलोड करना, ये सारी बातों का कोई अर्थ ही नहीं है हमारे लिए। I really got off track, didn't I? मैं थोड़े रास्ते से भटक गया। So this was nice, this discussion about Apara and Tattva Vichar, all related together. तो ये बहुत ही अच्छी चर्चा थी कि अपार और परा के बीच में चर्चा और कैसे ये सारे Even संबंधित Krishna हैं। himself, he's quoting Mahaprabhu, they're saying the authorities have said, the bona fide authorities have said. यहाँ तक कि महाप्रभु और वो भी और ऐसे प्रमाणिक आचार्य भी बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण क्या कहते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं। They have concluded like this. उन्होंने इस तरीके से निष्कर्ष दिया है। Right? So Prabhupada said, first hear it, then you'll see it. प्रभुपाद कहते हैं Then पहले you'll आप understand it by their mercy. पहले आप श्रवण कीजिए फिर आप देख पाएंगे उनकी कृपा से। Don't manufacture anything. खुद से कुछ बनाने का प्रयास मत We're कीजिए। thinking we can think it up हम सोचते हैं हम कुछ सोच सकते हैं, by the strength of our intellect and mind. हमें हमारे स्वयं की बुद्धि और मन की शक्ति We से। don't understand that it's coming from outside. हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर बाहर से आएगा। Right? Tattva means Krishna.
तत्व का मतलब होता है So कृष्ण। I'm trying to understand the absolute truth. कि मैं परम सत्य को समझने का प्रयास कर So रहा हूँ। how we're going to understand the absolute truth without Krishna? तो कैसे हम परम सत्य को समझ पाएंगे कृष्ण के बिना? Doesn't Krishna have to participate in that effort? क्या कृष्ण हमारे प्रयासों में उनको भागीदारी नहीं निभानी होगी? I'm just trying to understand Krishna. I'm trying to understand the absolute truth. मैं कृष्ण को समझने का, परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। Okay, if it's sincere, then Krishna will send you bona fide guru. अगर ये कृष्ण है तो कृष्ण आपको प्रमाणिक गुरु भेज देंगे। And then he'll reveal himself inside and outside through that guru. और वो अपने आप को प्रकाशित करेंगे बाहर से, भीतर से और बाहर से गुरु के माध्यम से। So Prabhupada's talking about this tattva-darshi. प्रभुपाद यहाँ तत्वदर्शी This के is बारे a में big बता रहे हैं। topic. That's why I'm confused, like where to go with all of it. तो ये बहुत बड़ा विषय है जिससे थोड़ा मैं भ्रमित हूँ कि I कहाँ don't मैं know जाऊँ how इस विषय much के साथ। patience you have. और मुझे पता नहीं आप लोगों के पास कितना You धैर्य have है। patience? क्या आपके पास धैर्य है? It's fun, isn't it? ये Like बहुत just मजेदार है looking for the absolute truth. कि हम परम सत्य को ढूंढने का प्रयास करते जा रहे हैं, कि जैसे हम सोना खोद रहे हैं। Like gold, we call it golden nuggets. हम कहते हैं इसको सोने के टुकड़े ढूंढना। Are you looking for golden nuggets? क्या आप ये सोने के टुकड़ों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? Yeah, I used to go back in my house and read the Bible time after the class because Gurudev, by his mercy, he just opened purified consciousness, made it very interesting. Then I would just go through all the Shastra and I would look for all of these things. And I would write them all down because it was like a find. Everything was a find. तो जब भी मैं गुरुदेव के क्लास के बाद मैं वापस श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से वो हमें ये सारे मन बुद्धि इंद्रिय को शुद्ध कर देते थे और मैं हर जगह तत्वों को ढूंढने का प्रयास करता था सोने। It was exciting. तो बहुत मजेदार लगता था वो हमें। So is it exciting to get the Tattva Vichar presentation? तो क्या हमें आकर्षित कर रहा है तत्व विचार प्रस्तुति को कैसे हम ढूंढ पाएंगे? Oh well. So Prabhupada is saying here, you cannot manufacture it. प्रभुपाद कह रहे हैं आप इसको खुद से नहीं बना सकते। Manufacture means we think it can come from within us. बनाने का मतलब हम इस तरह सोच रहे हैं कि इसे हमारे अंदर से हम By our intelligence, our mind, our experience, right? That somehow or other we can come to some understanding. हमारी मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी शक्ति से किसी तरह से हम इसको समझ पाएंगे। Prabhupada says, this is the way of understanding. तो आप बताते हैं ये है समझने का तरीका। Means hearing from authorities of Tattva-darshi. यानी कि अधिकारियों से, तत्वदर्शियों से श्रवण करना। Prabhupada says we give reference sometimes in the modern age that such and such a professor says such and such. जैसे हम वर्तमान में कोई कथन का पुष्टिकरण इस तरह से करते हैं कि इस प्रोफेसर ने ऐसे बात की है, इस विद्वान ने, इस शिक्षक ने ये बात कही है। But they are not Tattva-darshi. लेकिन वो तत्वदर्शी भी नहीं है। They don't know Tattva. उनको तत्व नहीं पता। Prabhupada said they are all speculators. तो बताते हैं ये सब मनोधर्मी है। So if they're understanding and presenting apara, that means inferior material energy, that means Maya. तो अगर वो समझ रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं अपार का, इसका मतलब भौतिक शक्ति यानी That कि means माया, you're on mental platform, यानी कि वो मानसिक स्तर पे, sentimental platform, भावुकता के स्तर पे है, under modes of material nature. और प्रकृति के गुणों के अधीन। They are not Tattva-darshi. वो तत्वदर्शी नहीं है। We have to go and we have to hear from Tattva-darshi. तो हमें जाना होगा, श्रवण करना होगा तत्वदर्शी के पास आकर। Prabhupada says, so this Tattva-darshi, Tattva, this word you should learn very nicely. प्रभुपाद बता रहे हैं ये तत्वदर्शी शब्द आपको बहुत ही अच्छे से सीखने की जरूरत Such है। a nice word, right? Tattva. ये कितना अच्छा शब्द है तत्व, It's powerful. कितना Means शक्तिशाली it's है। true. इसका मतलब ये सत्य है। This tattva, this word, you should learn it very nicely. It means you should realize it. प्रभुपाद बता रहे हैं ये तत्व शब्द आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसका मतलब आपको इसको साक्षात्कार लेने की जरूरत है। Because that is authoritative. क्योंकि ये सही आधिकारिक है। If we do not do submissive our reception from Tattva-vid Guru and hear Tattva-vichar, it's all speculation. तो अगर हम तत्वविद गुरु के पास विनीत भाव से जाकर श्रवण नहीं करेंगे तो तत्व विचार नहीं पाएंगे, तो सारा कुछ It's मनोधर्म not है, authoritative. तो वो सही आधिकारिक नहीं होगा, It's just being manufactured. केवल ये बनावटी होगा। Manufacture, who does the manufacturing in the material world? भौतिक जगत में निर्माण कौन करता है? Maya. माया। So it's not authoritative. तो वो सही आधिकारिक नहीं होगा।
And others, they are not authoritative और ये सभी लोग को आधिकारिक लोग नहीं है, because they are simply speculative. क्योंकि केवल सरलता से मनोधर्म कर रहे हैं। They are simply speculation. वो प्रभुपाद ये सरलता से सब मनोधर्म है। So when someone claims that they know the absolute truth and they don't come and surrender and do submissive or reception from Tattva Guru, they have no access to the absolute truth. तो अगर कोई कहता है कि उसको परम सत्य का ज्ञान है, लेकिन कभी उसने विनीत भाव से श्रवण नहीं किया है तत्वदर्शी गुरु के पास, इसका मतलब उनको कभी भी परम सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, Shrota Parampara. क्योंकि ये श्रोत परंपरा है। So how do you download your faith? तो कैसे अपनी श्रद्धा को डाउनलोड करेंगे? By reading? पढ़कर? Is it just by reading you downloaded your faith? क्या पढ़कर केवल श्रद्धा को अपने अंदर डाउनलोड कर I सकते हैं? read and read and read and read. I didn't get faith really that way. तो मैंने पढ़ा, मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन कभी मुझे इस तरीके से श्रद्धा नहीं My लगी। eyes are not open to all of this. मेरी आंखें कभी इन सारी चीजों के प्रति खुल नहीं पाई। But when I try to surrender and do submissive all reception from Tattva Guru by His mercy, then He revealed Tattva to you. लेकिन जब मैंने शरणागत किया, तत्व गुरु के पास जाके विनीत भाव से श्रवण किया, तो ये सारे तत्व मेरे सामने प्रकाशित हो गए। Well, how do you know they're not Tattva Gurus? Because they have, first of all, they never came and surrendered and heard from a Tattva Guru. आप कैसे कह सकते हैं वो तत्वविद गुरु नहीं है? पहली बात कि उन्होंने कभी भी शरणागत आके श्रवण नहीं किया तत्वविद गुरु के पास। And how do you know? Because they never speak about Tattva Vichara. और आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो तत्व विचार के बारे में कभी बात ही नहीं करते। That's why they say we never heard this before. इसलिए वो कहते हैं हमने ये सब बात कभी सुनी Well, नहीं। then who were you hearing from? तो आप क्या सुन रहे थे? That the Tattva Guru was not explaining Tattva to कि you. तत्वविद गुरु आपको ये तत्व सिखा नहीं रहा है। We're talking about qualification, right? हम बात कर रहे हैं योग्यताओं के बारे में। So they are just speculating, the speculators. ये सब मनोधर्मी हैं, मनोधर्म कर रहे हैं। Prabhupada says, speculation. Prabhupada gave me this. Do you understand? कृष्णा और प्रभुपाद ने मुझे ये चीजें दी हैं, Because this is what needs to be discussed. क्योंकि ये चीजें चर्चा करने की जरूरत है। So I just go gold digging, तो मैं इस तरह से सोने खोदता हूँ, and Krishna just give it to me. और कृष्णा ये सब मुझे देते हैं। Gurudev gave it to me. गुरुदेव ने मुझे ये दिया, And it's right on the point, isn't it? और ये वही बातें हैं जो हम कह रहे थे। Speculation means mental platform. मनोधर्म का मतलब है मानसिक स्तर। It has no value. इसका कोई अर्थ नहीं है। As this body is non-permanent, जैसे ये शरीर अनित्य है, your flickering mind on mental platform is non-permanent. आपका ये चंचल मन मानसिक स्तर पे ये भी अनित्य है। Your mind is accepting and rejecting something. मन कभी स्वीकार करता है और कभी अस्वीकार करता है। One moment you're accepting, next second you're rejecting. एक क्षण आप स्वीकार करते हैं, अगले क्षण आप अस्वीकार करते हैं। This is the mind's business. ये है मन का काम। So your mind cannot be tattvadarshi. आपका मन तत्वदर्शी नहीं हो सकता। Interesting. Your mind cannot be tattvadarshi. बहुत दिलचस्प बात है, आपका मन तत्वदर्शी नहीं So हो if you सकता। go to your mind to understand it, your mind can, Krishna will not manifest to materialistic mind. तो अगर आप अपने मन के पास जाएंगे इसको समझने के लिए, तो कृष्ण आपके भौतिक मन के माध्यम से प्रकट नहीं होंगे। So if mind is under three modes of material nature, it still has different gross, subtle levels of material contamination and lust, तो मन still अभी controlled by Maya. अभी प्रकृति के नियमों के अधीन है और दूषित है, काम के अलग अलग स्तर से, अभी इसका मतलब अभी माया का प्रभाव है। So how can that material mind be tattvadarshi? तो कैसे ये भौतिक मन तत्वदर्शी हो सकता है? So that's why we say, how can we understand Shuddha Sattva topic with three-dimensional material contaminated senses? और इसलिए हम अक्सर चर्चा करते हैं कैसे हम दिव्य स्तर के आध्यात्मिक चीजों को समझ पाएंगे हमारे तीन आयाम वाले भौतिक स्तर से। ये संभव नहीं है। That's why we're trying to purify and get divine eyes and divine ears, divine senses by mercy. Otherwise, we have no ability to understand this from a materialistic point of view. इसलिए हम स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करें कि हमें दिव्य नेत्र, दिव्य कान, दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो सके ताकि हम इस परम सत्य को समझ पाएंगे। Prabhupada says, of course, we have to think with the mind. प्रभुपाद कहते हैं अवश्य हमें इस मन से विचार करना है।
but it must be under the direction of authority. लेकिन इसे सही अधिकारी के मार्गदर्शन में करना है. So that Tattvavid Guru, he establishes Tattva Vichar, that's the authority. तो तत्वविद गुरु तत्व विचार को स्थापित करते हैं, यही उनका प्रामाणिक अधिकार So है. if your mind is healthy and your mind is reminding you of those authoritative statements of Tattva Vichar, then accept it. तो अगर आपका मन स्वस्थ है और आपको याद दिला रहा है इन आधिकारिक शब्दों का तत्व विचार का, तब आप उसको स्वीकार कीजिए. That means under control and direction of the authority. इसका मतलब वो नियंत्रण में है और अधिकारियों के मार्गदर्शन में है. Then we can reach real tattva. तब हम असल तत्व तक पहुंच सकते हैं. Real tattva? असल तत्व? Isn't tattva tattva? क्या तत्व तत्व नहीं होता? That means there's a tattva and then there's a real tattva? इसका मतलब तत्व होता है, उसके बाद एक असल तत्व Wait a होता है. second. रुकिए What does जरा. that mean? इसका क्या अर्थ होगा? Apar vichar, tattva vichar. अपार विचार और तत्व विचार. Real tattva. असल तत्व. Really bona fide guru. असल में असल प्रमाणिक Guru गुरु. means bona fide guru. प्रमाणिक गुरु का मतलब Why प्रमाणिक do you have गुरु to होता say है. really bona fide क्यों guru? उनको कहना पड़ रहा है असल Right? प्रमाणिक Tattva गुरु? means absolute truth. तत्व का मतलब होता है Why do you have to सत्य. say real tattva? लेकिन यहाँ क्यों कह रहे हैं असल तत्व? Bhakti means Shuddha bhakti. भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति. You see why this discussion of Tattva Vichar is so important? तो आप देखिए ये तत्व विचार की चर्चाएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण है. If you don't get mercy and this doesn't get revealed to you, all you know is Apar Vichar on three-dimensional platform. अगर आपको कृपा नहीं मिलेगी और आपके सामने ये प्रकाशित नहीं होगा, तो केवल आप 3 स्तर आयामों के भौतिक ज्ञान को पाएंगे. Somehow we're in a spiritual, institution and we're talking about Krishna and we're doing sadhana, right? So that automatically that means Shuddha Sattva. तो किसी तरह से हम आध्यात्मिक संस्था में हम कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, हम सेवा में लगे हैं, तो अपने आप ही ये सब आध्यात्मिक है. We're devotees. हम भक्त हैं. Of course we know Tattva. Krishna is Tattva. अवश्य हम तत्व जानते हैं, कृष्णा है तत्व. But is that real Tattva? लेकिन क्या वो असल तत्व है? Bhagavan is the last word of Tattva. भगवान तत्व का सबसे आखिरी शब्द है. So Prabhupada says we must hear from Krishna, Bhagavan, and in disciplic succession from Krishna. कहते हैं हमें भगवान से, कृष्णा से श्रवण करना होगा और उनकी परंपरा से And Shastra. और शास्त्र से. That is Tattva Vichar. That is absolute truth is only spoken there. ये तत्व विचार है, परम सत्य केवल वहाँ बोला जाता है. Therefore it can only be realized there. इसीलिए केवल उसका साक्षात्कार वहीं किया जा सकता है. And everything else but that is mental speculation. और इसके अलावा जो भी चीजें हैं सब मनोधर्म है. It's not the real. वो असल नहीं है. Any questions so far? कोई प्रश्न अभी तक? I found all kinds of stuff for you guys today. आप लोगों के लिए मुझे बहुत तरह की चीजें मिली हैं. For me too. मेरे लिए भी बहुत अच्छा है. Hare Krishna. So just by reading, if we read from Prabhupada, but So who's reading? तो प्रभु पूछ रहे हैं अगर हम प्रभुपाद की किताब केवल पढ़ेंगे, तो गुरुदेव पूछ रहे हैं कौन पढ़ रहा है? Is it on soul platform? क्या वो आत्मा पढ़ रही है? Or are we reading using material mind, material conception, material intellect, material senses? या हम भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके पढ़ रहे हैं? Now, before we continue, is someone sincerely reading Shastra, reading Prabhupada's books, and is sincerely trying to understand Krishna and how to surrender to Krishna, and how to develop love for Krishna? Yeah. Krishna will know that. गुरुदेव बता रहे हैं अगर कोई गंभीरता से एक निष्ठता से श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहा है, कृष्णा को जानना चाहता है, उनको शरणागत करना चाहता है, कृष्णा प्रेम पाना चाहता है, तो कृष्णा उनकी मदद करेंगे, उनको प्रमाणित Krishna will करेंगे. say, this person is really looking for me. कृष्ण देखेंगे कि ये व्यक्ति असल में मुझे ढूंढ रहा है. Then what happens? Then Krishna will make an arrangement to meet bona fide तो guru. उसके बाद क्या होगा? कृष्ण आपके लिए व्यवस्था करेंगे कि आप प्रमाणिक गुरु से मिल पाएं. To help you to understand
practically in the Shastra. आपकी मदद करने के लिए, समझ पाने के लिए कि शास्त्र में असल में क्या बातें लिखी हैं। So nobody's saying don't read, तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप पढ़िए मत, but to really understand it, that sincerity and seriousness to understand it while you're reading, while you're chanting, while you practice devotional life, Krishna will reward you by sending bona fide spiritual master to help you to be able to realize and fulfill your spiritual desire. तो जब आप इस अपनी एकनिष्ठता और गंभीरता से किताबों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, भक्ति करने का अभ्यास करेंगे, अपनी साधना करने का प्रयास करेंगे, तो कृष्ण इस बात को देखेंगे और उसका फल वो इस तरीके से देंगे कि वो ऐसे प्रमाणिक गुरु को आपके पास भेजेंगे जो आपको इन सारी चीजों का साक्षात्कार दिला पाएगा। So in the verse where it says that Srimad Bhagavatam that Krishna within the heart then cleans was for the process of Krishna in the heart? Yeah. That what? That he cleans all the misgivings in the heart. He is cleaning your heart. He cleaning the heart. Yeah. By that desire to hear from him. Is he just getting like some brushes and some detergent and putting there and just scrubbing inside like this? Krishna? कि कृष्ण हमारे हृदय में मौजूद है और वो हमारे हृदय को अंदर से साफ करते हैं। जब कोई उनके बारे में सुनना चाहता है, गुरुदेव बता रहे हैं क्या वो ब्रश लेके और डिटर्जेंट लेके आके घिसना शुरू करते हैं उसको साफ करने के लिए। Then Krishna is saying, well, I'm going to need a bigger brush. You know? देखते हैं मुझे और बड़ा ब्रश लाना। This is like a Himalayan mountain, you know? हिमालय पर्वत यहाँ पे पूरा। I need some more stronger, you know, comet, you know, some detergent, you know? और मजबूत मुझे जो डिटर्जेंट चाहिए, शक्तिशाली। He's like sweating. He's like, कृष्ण के पसीने छूट रहे हैं वहाँ। right? And then he's in everyone's heart. That's like a lot of work. You know? सभी के हृदय में बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। He has better things to do, isn't it? उनके पास और बेहतर काम है करने के लिए। His gopis waiting for him there. Right? I'm almost done. गोपी उनका इंतजार कर रही हो, कह रहे हैं मैं बस अभी खत्म करने वाला हूँ। So, how Krishna cleans the heart? That's an interesting topic. कैसे कृष्ण हृदय को साफ करते हैं, ये दिलचस्प सवाल है। Because Krishna says, I'm in the heart, and to show special mercy, I purify your heart of all of this tamagun. तो कृष्ण बोलते हैं मैं आपके हृदय में हूँ और विशेष कृपा देने के लिए मैं आपके हृदय से सारे तमोगुण को साफ करता हूँ। Now, if we can't associate and hear from Krishna, लेकिन अगर हम कृष्ण के साथ संग करके उनसे श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, then Krishna says you're lost. तो कृष्ण कहते हैं आप भटके रहेंगे। So if we want to clean it, we want to hear from Krishna, we want to surrender and serve Krishna, then Krishna will send you bona fide guru. तो अगर हम इसको साफ करना चाहते हैं, कृष्ण से श्रवण करना चाहते हैं, तो कृष्ण आपको प्रमाणिक गुरु भेजेंगे। And then Krishna assumes the form of the guru. और कृष्ण उस गुरु का रूप लेकर आते हैं। Sakshat Daritpena Samasta Shastra. Acharya Mam Vajaniyat, right? He assumes the form of the Acharya, the guru Krishna. वो आचार्य का रूप लेके आते हैं, वो कृष्ण ही होते हैं। So then Krishna manifests and speaks through the guru, and so he enters into the sound vibration. तो कृष्ण गुरु के माध्यम से प्रकट होते हैं और उनके माध्यम से वो बातें करते हैं, यानी कि उस शब्द में वो प्रवेश करते हैं, वो शब्द ब्रह्म। So if you can hear nicely by mercy of Guru Krishna, तो अगर आप अच्छे से श्रवण कर पाएंगे गुरु और कृष्ण के कृपा से, और आप श्रवण का अधिकार पाएंगे, then Krishna in the form of the transcendental sound enters into your ear तो कृष्ण उस दिव्य शब्द के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करेंगे and goes to the heart. और आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। And so Krishna in the form of that, the purest of the pure, in the form of that transcendental sound, that's what will purify all the material contamination, all the tamagun. कृष्ण जो सबसे शुद्धता में विशुद्ध है, वो हमारे अंदर जब उस शब्द के माध्यम से प्रवेश करेंगे, वो हमारे अंदर से सारे कर्मस तमोगुण को शुद्ध करेगा। Otherwise, if we're just alone and say, okay, Krishna, you're the super soul, you're the purest of the pure, why don't you just purify me? वरना हम कहीं अकेले बैठे रहेंगे और कहेंगे कृष्ण परमात्मा है, आप सबसे शुद्ध में तत्व में शुद्ध हैं, तो आप क्यों मुझे शुद्ध नहीं कर रहे हैं? Right, then what's the need of a guru? तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? Krishna is Adi Guru, he's the original guru, कृष्ण आदि गुरु है, he's a Chaitya Guru. वो चैत्य गुरु है, So why can't he just do everything? तो क्यों वो सब कुछ नहीं कर पाते? So if we have a desire to become pure and to clean our heart and consciousness,
then Krishna will send you, or the Guru will come to you, or you go to the Guru. He'll give you purified medium of Krishna. तो अगर आपकी इच्छा है स्वयं को शुद्ध करने की, अपने हृदय चेतना को शुद्ध करने की, तो कृष्ण आपके लिए व्यवस्था करेंगे, या तो आप गुरु के पास जाएंगे या गुरु आपके पास आएंगे. That's why understanding parampara, Shrota parampara, is why that is so important. इसलिए ये श्रोत परंपरा को समझना बहुत ही Because महत्वपूर्ण they है. say, you know, there's so many gurus and they're all talking about Krishna. सभी कह रहे बहुत सारे गुरु हैं, सभी कृष्ण की बातें कर रहे हैं. Right, so then that katha that they're speaking, that will purify your heart and your consciousness. तो जो वो कथा कर रहे हैं वो आपके हृदय, मन और चेतना को शुद्ध करेगा. And that's why it's so bewildering, because we're so sincerely listening to everybody and not getting purified, actually getting worse. और ये इतना भ्रमित करने वाली बात है कि हम एक निष्ठता से उनको श्रवण करने का प्रयास करें और ये सब शुद्ध होने के बजाय और बड़ा बुरा हो This is सकता है. very controversial. तो ये बहुत विवादास्पद बातें हैं. Because you're not saying that, you know, you're not just saying that they couldn't really help you. आप बस ये नहीं कह रहे हैं कि वो आपकी केवल मदद नहीं कर सकते. You're basically saying that mental speculation आप असल में कह रहे हैं कि ये उनका मनोधर्म was contaminating me. आपको दूषित कर रहा है. So whatever gross, subtle material attachments, misconceptions I have, hearing from them, then you pick up that. तो जो भी उनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, जो भी गलत फहमियां हैं, वो आप उनसे श्रवण करके उनसे पालेंगे. So I was asking, why did I feel more Krishna conscious before I joined? तो मैंने ये सवाल उठाया कि मैं यहाँ जुड़ने से पहले मेरे अंदर ज्यादा कृष्ण भावना भावित में था. This was very bewildering to तो me. मैं बहुत ज्यादा भ्रमित हो गया ये देख के. Because Krishna was reciprocating so much with me. क्योंकि कृष्ण मेरे साथ इतना प्रतिफल कर रहे थे. And I felt there's so much internal spiritual reciprocation. और मैं भीतर से बहुत ही आध्यात्मिक आदान प्रदान कर पाता था कृष्ण के साथ. And inspiration and joyfulness, so much I could perceive by Krishna's mercy, this love and affection and guidance and inspiration. It was wonderful. That's what made us come to the temple, isn't it? तो मुझे प्रेरणा मिलती थी कृष्ण का मार्गदर्शन, कृष्ण के साथ इतना प्रेम और स्नेह और हमेशा उनके साथ ऐसा आदान प्रदान होता था और यही सब आध्यात्मिक है. What you're saying like that you were seeing, oh, Krishna is making this arrangement and it's very fascinating and mystical and a spiritual experience, right? क्या आप ऐसा नहीं कह रहे थे कि कृष्ण ने आपके लिए बहुत अद्भुत व्यवस्था की, आपको कुछ जादुई और अद्भुत लगा जब आपके साथ ये सब And चीजें that's शुरू what हुआ brought us to the temple. और ये करते हुए हम मंदिर तक पहुंचे. But after a while, all the blissfulness and all of the happiness and inspiration and all of the mystical, transcendental experience that I had tasted before, I could not realize that. तो ये सारा आध्यात्मिक अनुभव, मुझे जो स्वाद मिल रहा था, जो आनंद मिल रहा था, आध्यात्मिक प्रतिफल मिल रहा था, अब मुझे मिलना बंद हो गया. So I became dissatisfied. तो मैं अब असंतुष्ट होने लगा. Right? If you had a higher taste and now you don't have it, how are you going to be like satisfied? आपको कोई अगर ऊंचा स्वाद मिला हो और आपको अब वो नहीं मिल रहा, तो कैसे आप अब संतुष्ट रह पाएंगे? Because all you do is you remember the good old days, you know? क्योंकि आप एक ही चीज करेंगे, अपने जो पुराने अच्छे दिनों को याद करने का प्रयास Then करेंगे you'll be chasing for that. और आप उसके पीछे भागने का प्रयास How करेंगे do I get that back? कि मुझे वो वापस कैसे मिल पाएगा. So I remember I was trying to tell one guru this point. तो मुझे याद है एक गुरु को मैंने ये बात बताने का प्रयास किया. That this is very bewildering to me, because how I can do all of this sadhana for so many years, तो ये मुझे बहुत भ्रमित कर रहा था कि कैसे मैं इतने सालों से इतनी सारी साधना कर रहा हूँ. chant minimum 16 rounds a day, कम से कम 16 माला जप हर दिन, and read Prabhupada's books 2-3 hours a day, प्रभात किताबें दिन में 2-3 and घंटे पढ़ना, distribute Prabhupada's books, you know, so many hours a day, 6 days a week. और प्रभात किताबों को प्रतिदिन कई घंटे प्रचार करना, हफ्ते के 6 दिन. All of that effort, इतना सारा प्रयास करने के बाद how can I be less Krishna conscious now than before I joined? कैसे मैं आज कम कृष्ण भावना भावित महसूस कर रहा हूँ उस दिन के मुकाबले जब मैंने पहली बार यहाँ आया था. Wouldn't Krishna be like reciprocating more with me? कैसा नहीं होना चाहिए कृष्ण मेरे साथ और ज्यादा आदान प्रदान करते अगर मैं So इतनी that सारी was चीजें कर रहा very हूँ. bewildering to तो me. मैं बहुत भ्रमित होने लगा इसको देखकर. And when I tried to ask different
senior devotees, gurus, और मैं जब अलग अलग वरिष्ठ भक्तों और गुरुओं को जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया, they would just say, I don't know what you're talking about. मुझे कहने लगे मुझे पता ही नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो। They would get angry at me. फिर मुझसे गुस्सा होने And लगे they'd just like run out of the room. और कमरे से वो भाग के चले गए बाहर। And I'm saying, I'm being serious. This is my dawah. You're supposed to help me, और मैंने कहा मैं गंभीरता से अपना संदेह आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी मदद If करनी I चाहिए। could overcome it, I wouldn't be asking you. अगर मैं स्वयं इससे बाहर निकल पाता तो मैं इसके You're बारे में supposed to be पूछता my नहीं। guru. You're supposed to be the one who's destroying my dawah. आप गुरु हैं तो आप मेरे संदेहों को नष्ट करने की जिम्मेदारी है। That's your job. तो ये आपका कार्य है। I'm doing my job saying this is my dawah. मैं अपना कार्य कर रहा हूँ कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये मेरे संदेह And then I'm trusting you enough to listen to your advice. I'm doing my job. I'm doing my side. और मैं अपनी तरफ से ये विश्वास कर रहा हूँ कि मैं आपकी सलाह को स्वीकार करूंगा तो मैं And then अपना you कार्य get करने का प्रयास कर angry रहा at me? हूँ और उसके उल्टा आप मैं उस पर ही गुस्सा I हो said, गया। okay, this is nowhere is this supposed to be like this. तब मुझे समझ में आया कहीं भी इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। So he cannot help me. तो मैंने देख पाया वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। He's not capable of helping me. वो मेरी मदद करने के लायक नहीं। He's not even taking the time to even understand me. वो अपना Or just समय even तक helping me. वो अपना समय तक नहीं दे रहे हैं मेरी बात को समझने के लिए तो He उससे couldn't मदद be करने के लिए bothered. तो वो तो उसकी समस्या ही नहीं लेना चाहते हैं। He said, I'm not coming down to your platform. मैंने कहा मैं तुम्हारे जैसे नीचे Who स्थिति में speaks नहीं हूँ। like this? I'm not coming down to your platform. कौन इस तरह से बातें करता है कि मैं तुम्हारे जैसे उस स्थिति में नहीं आऊंगा। You're such a big guy, are you, huh? Not coming down to my little measly platform. इतने बड़े व्यक्ति हैं कि तुम्हारे इस कंजूस वाले स्तर पे मैं नहीं आऊंगा। But I had to go through this experience. लेकिन मुझे इस अनुभव से गुजरना पड़ा। Because spiritual, and then when I went to Srila Govinda Swami, he said, when you joined, you were very simple-hearted. और जब मैं श्रील गौर महाराज से उन्होंने कहा जब आप जुड़े थे तो आप बहुत सरल हृदय वाले थे। Just like these devotees last night, they're so simple that just the mention of Gopal's name, they all became like, oh, Gopal. They're so simple. जैसे कल जो वक्त थे वो इतने सरल थे, हमने गोपाल का नाम लिया और वो सब इतने आनंद में मुस्कुराने लगे आनंद गोपाल का नाम सुनकर। So how is it we were more simple before going through this, this military sadhana program for the last 6 years, तो कैसे हम पहले ज़्यादा सरल थे जब इस तरह के सेना की तरह हम जो अनुशासन का साधना का हमने पालन किया और हम कम कृष्ण भावना भावित हैं। That's like militant spirituality, you know what I mean? ऐसे सेनानी आध्यात्मवादी। And then we were all in the temple room, and there's like all these crazy brahmacharis, and they're going 100 miles an hour, circling in the temple room. और हम ब्रह्मचारी जो थे मंदिर में वो screaming, जो हरे कृष्ण महाराज जप कर रहे थे चिल्ला कर और 100 मील प्रति घंटा से दौड़ रहे होते थे सर पे गोल इस तरह से जप कर रहे थे पागल की तरह। It looked like an insane asylum. Everyone's minds are bouncing off the walls, देखने में लगता था हम पागल खाने में सबका मन जो है कूद रहा है पूरे कमरे में। Then when Maharaja, he had like this, just walking around, और एक महाराज के कान में जो हेडफोन लगाए होते थे इस तरह से घूमते थे वो पागल लगते थे सब। It was like Indy 500, man. Once you get in that little loop there, you can't even get out of it. You know what I mean? एक जैसे चक्र है उसके अंदर का घुस गए। Walked 15 miles in japa period. 15 मील प्रति घंटा से वो घूम रहे होते थे जप के समय में। How does it 15 मील जप के समय में I'd be like laying on the couch and people were like, waking me up. I'm gonna go to Bhagavatam class. I'm exhausted, और मैं जो है सोफे पे जब करके थक के सो जाता था लोग मुझे आके उठाते थे भागवतम क्लास में जाना है। Can I just sit down for like 5 minutes? Just take care of it, क्या मैं 5 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ? नहीं जब करते That's रहो। Maya, ये So माया है। I won't fall asleep, just keep walking. मुझे नींद आ जा रही है नहीं चलते रहो बस। It wasn't that bad. I'm a इतना little बुरा नहीं। exaggerating. थोड़ा ज़्यादा But it felt like that. लेकिन ऐसा महसूस होता था मुझे। I told you guys before, I make like a joke. You'd have to calculate like when you're gonna get off the highway and like where you're gonna land, like somewhere in the temple. Like you're looking around, okay, there's a cushion. My
my next lap around, you know, and then somehow like you go for a pit stop, you know. You like dive for the pillow, you know. You're throwing elbows. It's like I gotta sit down. I'm exhausted. तो जब करने के बाद ऐसे थक जाते हैं कि हम सोफे पे डूब रहे This हैं, कहाँ is मुझे on तकिया my मिलेगा? feet, my hand, my brain. मेरे हाथ में, उंगली में, सर में, पैर में, सब जगह दर्द हो रहा है, छाले पड़ गए। And I was like, what happened to that simple reciprocation with the Lord, you know? तो मैं वो याद कर रहा हूँ, वो जो सरल आदान प्रदान होता था भगवान के साथ, वो कहाँ चला गया? So I was missing that, you know? ये सब चीज मैं याद कर रहा था। And then finally, by mercy, Prabhupada, Krishna, I met Srila Govinda Maharaj. He said, spiritual life is internal. और अंत में प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु मिले, उन्होंने मुझे बताया कि आध्यात्मिक जीवन असल में भीतरी होता It's है, not external. ये बाहरी नहीं होता। And it was like, oh my God, you know, that's what happened. You get caught up in all the externals, you forget the whole point of the spiritual life. कि आप इतने सारे बाहरी चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो कि आप भीतरी आध्यात्मिक जीवन को भूल ही जाते हैं। So you have permission here to be internal. तो आप सभी को यहाँ It's अनुमति है highly कि आप encouraged. भीतरी आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकते हैं, इसको बहुत सराहना की जाएगी यहाँ। That's where the reservoir of all pleasure is. वहीं पे सारे आनंद के भंडार हैं। We're looking for peace and happiness, and we're avoiding the reservoir of all pleasure. We're like, I don't know why I'm not peaceful and happy. तो हम सुख और शांति की तलाश कर रहे हैं, और जो सुख शांति के आनंद के स्रोत हैं, हम उनको ही भूल जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं क्यों हम सुखी और संतुष्ट नहीं हैं। So we have to be reminded. तो हमें याद दिलाने की जरूरत है। So does it mean that only those who were close to Srila Prabhupada were actually able to apply themselves properly to their sadhana, able to hear from him and had close association? What was that? So was it The Prabhupada's disciples? Yeah, only those that were close to Prabhupada and were able to hear from him constantly, regularly, that were able to What apply did they themselves. hear? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि जो प्रभुपाद के शिष्य जो उनके साथ ज्यादा संग कर पाए और उनसे निरंतर श्रवण कर पाए, तो गुरुदेव पूछ रहे हैं उन्होंने क्या श्रवण किया? So Prabhupada says that if you speak very nicely, that means you heard very nicely. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से श्रवण किया है। If you're speaking and you're just concocting and you're, you know, false ego platform and you're not coming down to anyone's platform and you're, you know, just speculating and, you know, getting angry and, you know, what did you hear? तो आप अगर मिथ्या अहंकार के स्तर से बात कर रहे हैं, आप मनोधर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके स्तर में गिरूंगा नहीं आपसे बात करने के लिए, तो इस तरह से अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उन्होंने क्या श्रवण किया है? Or you skip a Natana Vritti and, you know, now you're a gopi and you know, what is it? Separation. तो आप या फिर अपने अनर्थ निवृत्ति प्रक्रिया को छोड़ के गोपी के भाव में, विरह के भाव में आ चुके हैं। Where did Prabhupada say to do like that? प्रभुपाद ने ये कहाँ करने को कहा है? That means they never heard Prabhupada. इसका मतलब कभी उन्होंने प्रभुपाद को सुना ही नहीं है। Because if you really hear from Tattvavid Guru and you realize those tattvas by their mercy, that's what you're going to speak about. क्योंकि अगर असल में आप तत्वविद गुरु से श्रवण करेंगे और उनकी कृपा से जब आप उन तत्वों का साक्षात्कार करेंगे, तो केवल आप वही तत्वों की बातें करेंगे। Quoting Srila Prabhupada's books, श्रील प्रभुपाद की किताबों, उनकी शिक्षाओं की बात लोगों को बताएंगे। We're not making this up. खुद से हम नहीं बना रहे कुछ भी। So if they really heard and understood these things and saw these things, why nobody's talking about it? असल में अगर उन सारी चीजों को सुना, उनको समझा और देखा, तो क्यों इसके बारे में बातें नहीं कर रहे? Now of course they'll say we always talk about this. और अवश्य वो कहते हैं हम हमेशा इसकी बातें करते हैं। Then I say okay, then we're all deviated, right? और फिर हम कहते हैं इसका मतलब हम सभी भटके हुए हैं। Who's talking about it? कौन इसके बारे में बातें कर रहा है? And then the person who is talking about it, you're trying to throw him out of the institution. और जो व्यक्ति इसकी बातें कर रहा है, उसको वो संस्था से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। That's your realization. That's your association with Tattvavid Guru. ये You're आपका trying to get rid साक्षात्कार of him. ये आपका तत्विद गुरु के संग करने का प्रभाव था। आप उस वैसे व्यक्ति को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं Who came and surrendered to Tattvavid Guru. जो आए और तत्विद गुरु को जिन्होंने शरणागत किया। And if you truly realize Srila Prabhupada, you would realize Krishna manifesting through his parampara
because it's Krishna coming again in a different form. अगर आप असल में श्रील प्रभुपाद को समझ पाएंगे, इसका मतलब ये समझ पाएंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद के परंपरा में कैसे कृष्णा प्रकट हो रहे हैं. This is exactly what I found earlier on this exact point. तो ये वही चीजें मुझे मिली इन्हीं बातों की. So let's read that for a minute. तो चलिए वो भी हम एक मिनट. Do you have an appointment? Do you have anything better to do? किसी कोई मुलाकात के लिए जाना है, किसी के पास कुछ बेहतर कार्य है करने के लिए. And we'll discuss more. और हम और चर्चा करेंगे. So Srila Prabhupada, he's talking about what is a guru. तो श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं गुरु का मतलब क्या होता है. This August 22, 1973 in London. अगस्त 22 अगस्त 1973 लंदन में. So this is Vedic injunction. तो वैदिक वाक्य है ये. Somebody was asking whether that guru is absolutely necessary. कोई पूछ रहा था क्या गुरु की आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी है. And Prabhupada said, yes, absolutely necessary. प्रभुपाद ने कहा ये सबसे ज्यादा जरूरी है. Because that's Vedic injunction. क्योंकि ये वैदिक वाक्य है. The Vedas said, Tat Vijnanatam. Tat Vijnana means realized spiritual knowledge. शास्त्र बताता है तत्व विज्ञान, इसका मतलब आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार प्राप्ति ज्ञान. Not jnana, not theoretical knowledge. ज्ञान नहीं, मौखिक ज्ञान. Tattva Vijnana तत्व विज्ञान means realized spiritual knowledge. यानी साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान. And for acquiring that spiritual knowledge, then association and hearing from Tattvavid Guru, that is required. ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तत्वविद गुरु का संग करना बहुत जरूरी है. One must go to Guru. किसी को अवश्य गुरु के पास जाना चाहिए. Not a Guru, किसी भी गुरु के पास नहीं. the Guru. प्रमाणिक गुरु के पास. Guru is one. गुरु एक होते हैं हमेशा. Because as it is explained, the Guru is coming from the disciplic succession. जैसे बताया गया है गुरु परंपरा में आते हैं. What 5,000 years ago Vyasadeva instructed or Krishna instructed, the same thing we are also instructing. जो आज से 5000 साल पहले कृष्णा और व्यासदेव ने निर्देश दिए, वही निर्देश हम भी आज दे रहे हैं. There's no difference between the instruction. तो उन निर्देशों के बीच में कोई अंतर नहीं. So how are they seeing a difference between the instructions? तो कैसे वो ये अंतर देख पा रहे हैं निर्देशों के बीच? Because they're going from apar vichar to tattva vichar. क्योंकि वो अपार विचार से तत्व विचार की तरफ जाने So का प्रयास कर रहे they हैं. seeing that there's a distinction, there's a difference. तो वो देख पा रहे हैं ऐसा कि दोनों के बीच में कोई But if अंतर है. you really understood Srila Prabhupada, लेकिन अगर असल में आप श्रील प्रभुपाद को and समझ you पाएंगे heard and understood tattva vichar, और अगर आप सुनेंगे और समझ पाएंगे तत्व विचार, then you would understand that wherever that tattva vichar is being presented to you. तो आप जहाँ भी तत्व विचार प्रस्तुत किया जाएगा आप अपने आप समझ पाएंगे. Because there's no difference between the instruction. क्योंकि निर्देशों में कभी कोई अंतर नहीं So होता. why are they perceiving a difference in the instruction? तो क्यों वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अलग तरह के निर्देश प्रस्तुत किए जा रहे हैं? Therefore the Guru is one. इसीलिए गुरु सदैव एक होते हैं. Although hundreds and thousands of acharyas have come and gone, यद्यपि सैकड़ों और हजारों आचार्य आके जा चुके हैं, but the message is one. लेकिन संदेश एक है. Therefore, Guru cannot be two. इसीलिए गुरु कभी दो नहीं हो सकते. That's why it says bona fide Diksha Shiksha Gurus are equal, identical manifestations of Krishna. इसलिए कहते हैं प्रमाणिक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु परमात्मा के एक समान और बराबर प्रकट रूप होते हैं. Real Guru असल गुरु would not talk differently. कुछ भी अलग तरीके से नहीं सिखाएगा. Some guru says, well, in my opinion, according to my understanding, कुछ गुरु कह सकते हैं मेरी समझ के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार you should do like this. आपको ऐसा करना चाहिए. And some other gurus say, well, in my opinion, I think you'll do like this. और कोई दूसरा गुरु आके कहेगा मेरे विचार से आपको ऐसा करना चाहिए. They are not guru. वो सब गुरु नहीं है. They're all rascals. सब बदमाश हैं. Prabhupada said, प्रभुपाद का don't blame me. मुझ पे कोई They're दोष all मत डालिए. rascals. सभी बदमाश हैं. Guru has no own opinion. गुरु खुद का विचार नहीं देते हैं. This is my opinion. ये मेरा विचार. Guru has no own opinion. गुरु के पास कोई खुद का विचार नहीं होता.
Guru has got only one opinion, and that opinion is the same opinion which is being expressed by Krishna, Vyasadeva or disciplic succession. गुरु के पास केवल एक विचार होता है और वो विचार कृष्ण ने व्यक्त किया है, व्यासदेव ने व्यक्त किया है इस परंपरा में। So we have to present what Krishna says, Krishna Parampara says. So if you don't hear it, how are you going to present it as it is? तो हमें वो प्रस्तुत करना है जो कृष्ण और कृष्ण के परंपरा कहते हैं। अगर आपने इसको श्रवण नहीं किया तो कैसे आप इसको प्रस्तुत करेंगे? You're just misinterpreting and giving own opinion. तो आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं और अपना विचार दे रहे हैं। This is concoction. This is manufacture. ये मनगढ़ंत चीजें हैं और कुछ बनाया जा रहा है। So if you present as it is from Krishna, Krishna Parampara, that is your duty. Then he's real guru. तो अगर आप यथारूप में कृष्ण कृष्ण परंपरा की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो असल गुरु है। Then he's being honest. और वो अब ईमानदारी बरत रहे हैं। The guru cannot be two. गुरु कभी दो नहीं होते। The person may be different, but the message is the same. लोग अलग हो सकते हैं लेकिन संदेश सदैव एक होगा। So if you really heard Krishna manifesting through pure bio medium, wherever that pure bio medium and disciplic succession is manifesting, you will hear Krishna. Because the message, the personality is exactly the same. क्योंकि अगर आपने कृष्ण को श्रवण किया है कृष्ण के शुद्ध माध्यम परंपरा में, तो जहाँ भी वो कृष्ण के शुद्ध माध्यम भले कोई अन्य व्यक्ति हो उसके माध्यम से प्रकट होकर बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये परम सत्य की बातें की जा रही हैं। We do not interpret, we do not give our own opinion. हम कुछ तोड़ मरोड़ नहीं करते, खुद के विचार नहीं लाते। This is all rascaldom. ये सब बदमाशी है। The whole situation has been spoiled by these so-called rascal gurus. तो ये सारी परिस्थिति खराब की जा चुकी है इस बदमाश गुरुओं की वजह से। Who are giving their own opinion. जो खुद के विचार देते हैं। This is our plain declaration, Prabhupada says. और ये हम खुले तौर पे घोषणा कर रहे हैं। Let any rascal guru come. कोई भी बदमाश गुरु को यहाँ नहीं दीजिए। And we can convince him that he is not a guru. और हम उनको आश्वस्त कर देंगे कि आप गुरु नहीं हैं। Because he's speaking differently. क्योंकि वो कुछ अलग बातें बता रहे हैं। We can challenge any rascal. हम किसी भी बदमाश को चुनौती दे सकते हैं। Just like somebody came here and he says that, you know, he's God, and we're all God. जैसे कोई आया उसने कहा हम भगवान हैं, हम सभी भगवान हैं। So Prabhupada is so confident. प्रभुपाद Because he इतने knows the आत्मविश्वासी tattva. क्योंकि उनको तत्व पता So है। if someone not presenting the tattva, then you can show clearly you're a rascal. तो अगर कोई तत्व प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो आप साफ साफ उसको दिखा Not सकते हैं really आप एक बदमाश guru. है, असल गुरु नहीं है। Prabhupada said, so that person came and I said, okay, you're God, everybody's God. तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं भगवान हूँ, सभी व्यक्ति भगवान हैं। So Prabhupada said, so I just asked him, find out in the dictionary what is the meaning of God. तो मैंने उनसे कहा कि आप डिक्शनरी में उठाइए और देखिए भगवान का अर्थ क्या होता है। And then let's see whether he's God. और चलिए हम देखेंगे कि वो भगवान है या नहीं। As soon as the dictionary was consulted, और जैसे ही डिक्शनरी में ये बात देखी गई that what is the meaning of God, कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है, it says the supreme being. कहते हैं वो परम व्यक्ति। So God is the supreme being. तो भगवान एक परम व्यक्ति है। And then I asked him, और मैंने उनको पूछा are you supreme? क्या आप परम व्यक्ति Are you हैं? the supreme being? क्या आप एक परम व्यक्ति हैं? And if you cannot understand, और अगर आप समझ नहीं पाते हैं then let's go back to the dictionary and find out what is the meaning of supreme. चलिए हम डिक्शनरी में वापस जाते हैं ये देखने के लिए कि परम शब्द का अर्थ क्या होता है। Then when we consulted the dictionary of supreme, तो फिर से जब हमने डिक्शनरी खोला सुप्रीम it said शब्द the इसका अर्थ greatest देखने के लिए, authority. कहते हैं जो सबसे बड़े अधिकारी हैं। So then I asked him, तो मैंने उनको पूछा are you the greatest authority? कि आप सबसे बड़े अधिकारी हैं? And then this rascal, he could not answer. और फिर ये बदमाश उत्तर नहीं दे पा रहा था। He does not even know
the dictionary meaning of it. उनको तो डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं, मतलब अर्थ भी नहीं पता था इस सब। And then he's claiming that he's God. और वो दावा कर रहा है कि वो भगवान है। You don't even know what it means in the dictionary, and God doesn't know the meaning in the dictionary. उनको डिक्शनरी में जो है भगवान शब्द का क्या अर्थ है वो भी नहीं मालूम और खुद को भगवान कह रहे हैं। Prabhupada, he just said you're just simply consulting the dictionary. बात कह रहे हैं हम अगर सरलता से कोई डिक्शनरी भी देखें, What is the meaning of God? That God is such a cheap thing. कि भगवान का अर्थ क्या है, भगवान कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है। So Prabhupada says here. प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। So there are so many of these different types of cheating rascal gurus. तो इतने अलग-अलग तरह के ठग और बदमाश गुरु हैं। They cannot help you. वो आपकी मदद नहीं कर सकते। The guru must come from the parampara system by disciplic succession. अवश्य गुरु परंपरा व्यवस्था में आते हैं। The 5,000 years ago, 5 million years ago, whatever was spoken by the Supreme Lord, 5,000 साल पहले, 5 अरब साल पहले जो भी भगवान ने कहा था, or the guru, या तो गुरु ने, the present guru also will say exactly the same thing. वर्तमान में मौजूद गुरु भी बिल्कुल वही बात करेंगे। That is guru. ये है गुरु। That is bona fide guru. वो है प्रमाणिक गुरु। Otherwise, he's not guru. वरना वो गुरु नहीं है। So if they're not presenting guru tattva, वो गुरु तत्व प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। that means they never heard it. इसका मतलब कभी उन्होंने सुना नहीं। Because it's not like you heard it, you realized it, but you just refused to tell people about ऐसा नहीं it. कि आपने सुना, आपने साक्षात्कार किया, लेकिन बाकी लोगों को अपने बताने से इसको मना That कर makes दिया। no sense. इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता। No, you're not telling anyone about it because you never heard it, you don't realize it. आप इसके बारे में लोगों को बता नहीं रहे क्योंकि आपने ना तो कभी सुना है, ना आपने कभी And you don't साक्षात्कार see it किया in the है। revealed scriptures. You don't see where Prabhupada's explaining it. और आप नहीं देख पा रहे कि शास्त्रों में क्या ये बताया गया है, प्रभुपाद ने क्या And बताया that's why you're thinking that what we're saying is a deviation. It's not our philosophy. इसलिए आप कह रहे That हैं further proves the point. कि हम जो बातें कर रहे हैं वो असल सिद्धांत नहीं है, तो ये हमारी बातों को ही साबित कर दे रहा है। Why Prabhupada didn't correct or made it more clear? Why he didn't correct them? Yeah, or made it more clear about Prabhupada this said nuance. this is a hard head. वो पूछ रहे हैं कि क्यों प्रभुपाद ने सारी चीजों के साफ तरीके से नहीं बताया। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि हमारा सर जो है बहुत सख्त है, नारियल की तरह, Thick-headed. बहुत सख्त हमारा सर। प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। No adhikar. कोई अधिकार नहीं है, They didn't get right of hearing. उनको श्रवण का अधिकार नहीं मिला, They didn't get mercy. उनको कृपा नहीं मिली। Otherwise, they would have heard it. They would realize it by the mercy of Guru and Krishna, and they would be preaching it. अगर उन्होंने श्रवण किया होता और साक्षात्कार किया होता गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो वो इसका प्रचार कर रहे होते। That's why when that Maharaja asked what I should talk about, and I gave him some topic like this, तो I इसलिए said, जब let's see how he's going to talk about this topic. जब महाराज ने मुझसे पूछा मुझे क्या विषय में बात करनी चाहिए, तो मैंने उनको ऐसे ही कुछ विषय उठा कर दी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो क्या बातें करेंगे इसके विषय में। It was like the first time he ever tried to talk on the topic. ऐसा लग रहा था पहली बार जीवन में उस विषय में बात करने का प्रयास कर It रहे wasn't like coming out like volcano. थे। अपने ज्वालामुखी की तरह उनके अंदर से बातें नहीं आ रही थी। It wasn't automatic, natural, understanding and explanation. अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से वो व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। Certainly wasn't quoting Prabhupada's books and teachings. और अवश्य प्रभुपाद की किताबों और शिक्षाओं की बातें नहीं बता पा रहे थे। Feelings, emotions, भावनाएं, thoughts, अनुभूतियां, ideas, विचार, speculation, मनोधर्म, theoretical platform. मौखिक स्तर, Then you can see the difference. और तब आप अंतर देख पाएंगे And the effect is different. और प्रभाव भी अलग दिखेगा। In that Srila Prabhupada's disciples were kind of empowered to do things that are quite monumental. But then I guess that also because I asked Srila Govinda Swami this question. What's the tattva on this point? तो प्रभु पूछ रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे चीजों को सशक्तिकरण मिला अद्भुत कारनामे करने के लिए, तो मैंने श्रील गौर गोविंद महाराज से भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गुरुदेव बोध में। I said, these devotees distributing so many books, and they're opening so many temples, and they're doing all of these things, so it looks like they're empowered and they're getting mercy, and how they're able to do like this? मैंने पूछा कि They don't have a guru.
कि ये सारे इतने बड़े बड़े किताबें, इतनी बड़ी संख्या में किताबों का बांट पा रहे हैं, इतने सारे मंदिर खोल पा रहे हैं, ऐसे अद्भुत कारनामे ये कर पा रहे हैं। तो मैंने श्री गौर गोसाई महाराज से पूछा, अगर इनके पास गुरु भी नहीं है, इनके पास कृपा नहीं है, तो कैसे ये सारे कारनामे कर पा रहे हैं? They have some mystic siddhi. गुरुदेव ने कहा कि उनके पास कुछ यौगिक सिद्धि है, Some mystic siddhi. कुछ यौगिक सिद्धि है। So if you're performing severe austerities, तो आप कठिन तपस्या करेंगे, right, and you're studying scriptures, और अगर आप शास्त्र का बहुत अध्ययन करेंगे, right? I went to one program with one Maharaj. He was like really militant austerities, right? मैं एक बार एक कार्यक्रम में एक महाराज के साथ गया, वो असल में एक तरह सेना की तरह वो तपस्या करते थे। Later he fell down, but at that time. बाद में उनको पतन हो गया, लेकिन उस समय वो कर रहे थे। But I remember that we did an Indian program, and this nice Indian family, they came with this big tully plate, and all the daughters and the sons and everybody came as like a family to offer to Maharaj, you know. तो उस इन भारतीय परिवार के घर में कार्यक्रम खत्म हुआ और महाराज के सामने जो है पूरा परिवार, बेटे बेटियां सभी लोग जो है बड़ा सा प्रसाद का प्लेट लेकर उनके सामने आ रहे हैं। And he became so angry. और फिर वो इतने गुस्सा हुए। And he's like, just give me one chapati, and I don't want any ghee on it. You और know? मुझे केवल एक चपाती दो, उसमें कोई घी भी मत लगाना। This is fanatical. This is madness. ये सब पागलपन है, ये सब बस मन गढ़ंत है। I remember when that story when the devotees, Prabhupada disciples, they went to one Indian man program, and then he tried to hand out some rasgulla or some sweet or something at the end. They were all acting like staunch, strict brahmacharis, you know. एक बार ऐसे प्रभुपाद एक भारतीय परिवार घर के कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पे जो है रसगुल्ला बांटा जा रहा था, तो जो ब्रह्मचारी ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि बहुत सख्त हैं, बहुत तगड़े ब्रह्मचारी हैं, पालन करते हैं ब्रह्मचर्य। And Prabhupada was like watching them do like this. प्रभुपाद ने देखा ये इस तरह के लोग नाटक कर रहे हैं। And then Prabhupada said, take the sweet, make the old man happy. प्रभुपाद ने कहा सब लोग मिठाई खाओ और बूढ़े आदमी को थोड़ा खुश करो। I laughed when I heard that. मुझे They're बहुत doing हंसी an आई। artificial display in front of Prabhupada, and Prabhupada said, just take the sweet, make the man happy, you know. आप जो बाहरी तरीके से नाटक करके दिखाने का प्रयास करें आप कितने ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रभुपाद ने कहा बस मीठा खाइए और बूढ़े आदमी को थोड़ा सुखी कीजिए। So they pick up some shakti. अवश्य उनके अंदर कोई शक्ति आ जाती है। I met different gurus. I don't have to mention their name. They have some shakti. मैं बहुत सारे अलग अलग गुरुओं से मिला और अवश्य उनके पास कुछ न कुछ शक्तियाँ थी। And then they're speaking in such a harsh way, and it's not nice, and it's just like this is not the spiritual shakti. लेकिन वो ऐसे कठोर तरीके से बात करते थे, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये कोई तरह का आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। It's painful. बहुत दर्दनाक लगता था। So even materially, you see people who are very successful. They have some shakti. यहाँ तक कि भौतिक रूप से आप देखेंगे जो लोग बहुत सफल होते हैं उनके They पास कुछ can शक्तियाँ get होती things हैं। done. वो They ऐसे can अपने control people. वो काम अपने ऐसे करवाते हैं और लोगों को ऐसे नियंत्रण में In the कर लाते material हैं। world, you see different people have so much shakti. यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी भौतिक They शक्तियाँ picked होती हैं। that up somewhere. कहीं से उन्होंने ये चीजें पाई। And a lot of them, they're like how these CEOs, they don't sleep. Like Musk, he's like sleeping in the building, and he's working 20 hours a day. I mean, they're performing severe austerity. जैसे कुछ बड़े-बड़े कंपनियों के जो मालिक हैं, वो कई दिन तो सोते नहीं हैं, 20 घंटे तक उनको काम करते रहते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं, sacrifice, इतना सारा austerity. त्याग करते हैं, So you're going to pick up some kind of shakti, तो उनके अंदर भी किस तरह की शक्ति आ जाती है, and you may get some power to do something. तो आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति आ जाती है, आप कुछ काम कर How many people are doing, building, skyscrapers and hospitals and schools and that takes tremendous amount of energy and shakti to do that. तो बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी इमारतें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े चीजें बनवाते हैं, इसको करने के लिए बहुत सारी शक्तियों की जरूरत होती है। But is that necessarily spiritual? लेकिन जरूरी नहीं वो आध्यात्मिक शक्तियाँ हों। And then if they have some ability to build some temples, then let them use that shakti, build the temples, and then when they leave and die, then future generations of pure devotees will come and use those temples. अगर किसी के पास कोई शक्तियाँ हैं कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से बड़े-बड़े मंदिर बनवा सकता है, तो उनको वो शक्ति का इस्तेमाल करने दीजिए उनकी सेवा में, और जब बाद में जब भविष्य की जब पीढ़ी आएगी शुद्ध भक्तों की, तो वो उन मंदिरों का इस्तेमाल करेंगे प्रचार करने में।
So this is process of the guru. You cannot disobey the previous acharyas or the guru. तो ये गुरु की प्रक्रिया है, आप पूर्वाचार्य के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकते। You have to repeat the same thing. आपको वही चीजें दोहरानी होंगी, not research. कुछ खोजबीन करने की जरूरत नहीं। Right? Where's Prabhupada speaking the sandarbhas to a bunch of new people? प्रभुपाद कहाँ संदर्भ सुनाते हैं नए लोगों को, Teaching them Raganuga Bhakti उनको रागानुगा भक्ति to सिखाते a bunch of hippies, हैं, कुछ हिप्पियों के to a समूह bunch को, of yogis योगियों के समूह को, who were participating in the bridge program. जो इस ब्रिज कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। So this, you have to repeat the same thing that you heard, तो आपको वही चीजें दोहरानी होगी जो आपने श्रवण किया है, not research. खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। Sometimes rascals come कभी कभी बदमाश आते हैं and they say, you are speaking the same thing. और वो कहते हैं आप वही बातें कह रहे हैं, Right? Why don't you speak some other thing? आप कुछ अलग बातें क्यों नहीं कह रहे हैं, Do some new research work. कुछ नया खोजबीन कीजिए। And Prabhupada was laughing and he said, we say that we have no intelligence, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, so we cannot make any independent research. तो हम कुछ अपने स्वतंत्रता से कुछ खोजबीन नहीं कर सकते। And then Chaitanya Mahaprabhu, he said that, well, my guru, he saw me, I'm just a great fool number one. और वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मेरे गुरु ने एक बहुत बड़ा मुझे मूर्ख देखा, मूर्खों में नंबर 1। So one who remains a great fool number one before his guru, he is a guru. तो जो कोई मूर्ख नंबर 1 बना रहता है अपने गुरु के सामने, वो असल में गुरु बन सकता है। And one who says that, well, I'm so advanced, और अगर कोई कहे मैं इतना उन्नत हूँ, I'm so much more advanced, I can speak better than my guru. मैं इतना ज़्यादा उन्नति कर चुका हूँ कि मैं गुरु से भी ज़्यादा अच्छी बातें बोल सकता हूँ। My Prabhupada said, if you can't do more than me, then at least do what I'm doing. प्रभुपाद ने कहा अगर आप वो नहीं कर सकते जो मैंने किया, तो कम से उस मेरे से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो करिए जो मैं कर रहा हूँ, मैंने So किया। they know more than Prabhupada. तो वो सोचते हैं प्रभुपाद से ज़्यादा जानते हैं, He's a rascal. तो वो बदमाश है। And this is the process, bro. और ये है प्रक्रिया, प्रभुपाद ने बताया। Krishna says in 4th chapter that he's reestablishing parampara. तो कृष्णा चतुर्थ अध्याय में बताते हैं वो परंपरा का फिर से स्थापना करते हैं। Now this is a very interesting point. Prabhupada says, so the guru is one. तो ये बहुत दिलचस्प बात है, प्रभुपाद बता रहे हैं गुरु एक होते हैं, The guru cannot be two. गुरु कभी दो नहीं हो सकते। As soon as you find two different opinions of the guru, जैसे ही आप दो अलग अलग मत देखेंगे गुरुओं के बीच में, either both of them are rascals, या तो दोनों ही बदमाश हैं, or one is still at least a rascal. या कम से कम एक तो जरूर बदमाश है। So either they're both rascals or one of them's a rascal. या तो दोनों ही बदमाश है, कम से कम एक बदमाश Because if it's है। coming from Krishna, it cannot even be two. क्योंकि अगर ये कृष्णा से आ रहा है तो ये दो भी नहीं हो सकता। This is guru. ये है गुरु। Prabhupada says, who needs a guru? प्रभुपाद कहते हैं गुरु की जरूरत किसे पड़ती है? A third class and a fourth class man, an ordinary man, does not require a guru. एक तृतीय चौथे श्रेणी का सामान्य व्यक्ति को गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। To keep a guru, have a guru, this is not a fashion. गुरु रखना, गुरु पाना, ये कोई किसी तरह का फैशन नहीं है। One who is very serious to understand spiritual life, जो बहुत गंभीर है आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए, he requires a guru. उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। Otherwise, there's no need of guru. वरना गुरु की कोई जरूरत नहीं है। Just like you're keeping some dog as a fashion, you don't keep the guru. जैसे किसी कुत्ते को फैशन की तरह रखा जाता है, उस तरह गुरु को रखने की जरूरत है। Guru means it is a question of necessity. गुरु का मतलब है ये हमारी अत्यंत जरूरत है। One must be very serious to understand what is spiritual life and what and who is God. किसी को बहुत गंभीर होना होगा ये जानने के लिए कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और कौन है और क्या है भगवान। Then what is my relationship with और God? मेरा क्या संबंध है भगवान के And साथ, how to act in that और relationship. कैसे मैं उस संबंध में कार्य कर सकता हूँ।
when we are very much serious on these topics, और जब हम बहुत गंभीर होते हैं इन विषयों में, on this subject matter, इन विषय वस्तुओं में, then we need a guru. तब हमें गुरु की जरूरत होती है. Don't go to guru just a matter of fashion. गुरु के पास किसी तरह का This is फैशन के लिए मत completely जाइए. useless. ये पूरी तरह से बेकार है. Interesting points, isn't it? बहुत दिलचस्प बातें हैं. So, Maharaj, so all these devotees or gurus that talk about this kind of like higher topics that Prabhupada maybe, I don't know. What is it? Because they say that, what do you say? That Prabhupada just keep repeating himself. Just stick to Repeating? himself, yeah. Just stick to basics. He's making that point about Prabhupada only gave the ABCs. Yeah, because they think it's ABCs. They're only understanding a parvichar understanding. तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद ने केवल शुरुआत में ABC दिया, चीजों को बताया, तो गुरुदेव बता रहे हैं क्योंकि वो उसको ABC की तरह से समझ पाए अपार विचार के तरीके से, इसीलिए उनको वही मिला. So their understanding, their aparvichar realization is inferior. तो वो उनका ये समझ, अपार विचार समझ, ये निम्न स्तर की समझ है. And because they don't know how to get mercy from Krishna and Tattvavid Guru and the Shastra, they can't come to realize Tattvavichar. और उनको पता नहीं है कैसे कृष्ण और गुरु और शास्त्र की कृपा पाई जा सकती है तत्वविद गुरु की, तो उनको तत्व का ज्ञान नहीं मिलता. They cannot understand it from an absolute perspective. वो परम सत्य के आधार पे उसको जान नहीं पाते. So that statement, not only is it offensive, तो उनका जो ये वाक्य है, ये ना तो केवल पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद के प्रति अपराध but है, it's proof that they didn't get mercy. लेकिन ये साबित करता है कि उनको कृपा नहीं मिली है. Because they can only see this inferior, materialistic, apparent, how do you say, presentation. क्योंकि वो केवल इस तरह निम्न स्तर की भौतिक और अपार विचार दृष्टिकोण को समझ पाए. And then the Gaudiya Math knows how stupid these people are. और गौड़िया मठ को पता है ये लोग कितने बेवकूफ हैं. And they say, well, come to us, we'll give you the higher teaching. उन्होंने कहा आप हमारे पास आइए, हम आपको ऊंची शिक्षाएं देंगे. So they offend Srila Prabhupada. पहले उन्होंने श्रील प्रभुपाद के प्रति अपराध किया. They take advantage of the ignorance of those offenders. और फिर उन लोगों ने इन अपराधियों का अज्ञान का लाभ उठाया. And then just give them a bunch of gyan, और उनको कुछ थोड़ा मोड़ा ज्ञान दिया, sentimental gyan, भावुकता वाला ज्ञान. and then they let them believe that they're elevated devotees practicing Raganuga Bhakti. और उनको ये विश्वास दिलाया कि आप लोग बहुत उन्नत भक्त हैं और रागानुगा भक्ति का अभ्यास So they करना cheat चाहिए. them. तो उन्होंने पहले उनको ठगा. And then the cheaters go back and cheat the other new cheaters और फिर उन ठगों ने आके नए लोगों को ठगने का शुरू who किया, accept them as advanced. जो उन लोगों को उन्नत मानते थे. So this is the parampara of the cheaters, तो ये ठगों की परंपरा है, of the offenders and the cheaters. अपराधियों की और ठगों की. How's that for an answer? ये कैसा रहा उत्तर के लिए? So, But it's true. लेकिन ये सत्य है. so many of these kind of like talks and many of these like topics and books, basically They don't even speculation. understand the Bhagavad Gita, basis. Baba. तो महाराज बता रहे हैं इन लोगों को भगवत गीता का भी ज्ञान नहीं है सही तरीके से. They cannot explain Bhagavad वो Gita. आपको भगवत गीता नहीं समझा सकते Tattvavichar platform. तत्व विचार स्तर से. What else are you going to talk about? और क्या आप बातें करना चाहते हैं? You can't get off a false ego platform because you think you're a guru and you're a scholar and you're an advanced devotee. And all of it is cheating, all of it is material, all of it is under false ego. And you don't even realize that. तो अगर आप मिथ्या अहंकार के स्तर पे हैं, खुद को गुरु मान रहे हैं, खुद को बहुत उन्नत मान रहे हैं और मिथ्या अहंकार में आप उसका अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं. You need a guru. आपको खुद एक गुरु की जरूरत है. The gurus need a guru. गुरु को गुरुओं की The जरूरत gurus need a real guru. है. गुरुओं को एक असल गुरु की जरूरत है. Let's put it that way. चलिए इस तरीके से बात The करें. bona fide gurus need a really bona fide guru. असल प्रमाणिक गुरु की जरूरत है.
Is that politically more correct? Does it sound better? क्या राजनीतिक रूप से बात सही लग रही है? Unless you understand the truth by hearing from one who understands the truth, you cannot understand it, you cannot see it, you cannot explain it according to Guru Sadhana Shastra. I'm not giving my opinion. तो जब तक आप सत्य को श्रवण नहीं करेंगे और उनकी कृपा से उसको समझेंगे नहीं, ना तो आप उसको देख सकते हैं, ना उसको समझ पाएंगे, ना उसका साक्षात्कार कर पाएंगे और ना ही ये किसी और को आप बता पाएंगे। Everything I'm explaining scientifically. और जो भी ये मैं सारी चीजें बता रहा हूँ वैज्ञानिक तरीके से आपको बता रहा हूँ। You can put any name in there you want, it doesn't matter. आप उसमें किसी का भी नाम डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। Just like Guru is one, Rascal Guru is one. जैसे गुरु एक होते हैं, रास्कल गुरु भी, बदमाश गुरु भी सब एक होते हैं। Like really Rascal Guru. असल में जो बदमाश गुरु हैं। So I guess you're not very favorable for Bhakti Shastri. Bhakti Shastra. They should come, I'll teach them Bhakti Shastra. लोग कह रहे हैं कि शायद भक्ति शास्त्री के उतने तरफ नहीं है, तो गुरुदेव बता रहे हैं उन्हें आना चाहिए, भक्ति शास्त्री सीखना चाहिए वहाँ कर। So you're on a false ego platform. अगर आप मिथ्या अहंकार के स्तर में हैं, You puffed up. आप अहंकार है आपके अंदर, You get some more gyan. आपको और ज्ञान मिल गया, Now you're more dangerous. अब आप और खतरनाक You हो get चुके more हैं, puffed up. अब और अहंकार बढ़ चुका है। So how do you get out of this cycle of arrogance and pride? तो इस अकड़ और दंभ के चक्र से आप मुक्ति कैसे पाएंगे? That's the problem with gyan. ज्ञान के साथ ये समस्या It है, makes you puffed up. ये आपको अहंकारी बना देता है। I'm not coming down to your platform. मैं तुम्हारे स्तर में नहीं गिरने वाला, I'm the Bhakti Shastri Guru here. भक्ति शास्त्री गुरु हूँ। So for one who is very serious to understand the science of God, तो जो बहुत गंभीर है भगवान के विज्ञान को समझने के लिए, for him a guru is required. उनके लिए गुरु की जरूरत होती है। Don't try to keep a guru as a matter of some fashion. Oh, I have a guru. गुरु को किसी फैशन की तरह रखने का प्रयास मत कीजिए कि मेरे पास एक गुरु है। What kind of guru you got? तो किस तरह का गुरु मिला है? You got a guru. What kind of guru you got? प्रभुपाद कह रहे हैं आपको किस तरह का गुरु मिले हैं? You're talking nonsense. आप बकवास बातें कर रहे हैं। Acharyavan Purusha Veda, one who has accepted a guru, जिसने गुरु को स्वीकार किया है, he'll talk sense वो मतलब की बातें करेंगे, where there is meaning. जिसमें कोई अर्थ होगा, He'd back it up. और वो उसको शास्त्र से प्रमाण देंगे। He won't just speculate and talk some nonsense. वो कुछ मनोधर्म करके कुछ फालतू बातें नहीं बताएंगे My opinion is like this. कि मेरे विचार में ये ऐसा है। So that is the sign that he has got a guru. तो ये संकेत है कि उनको गुरु मिला है। So when you speak according to perfect knowledge, perfect source, perfect hearing, authoritatively, that's the proof that you have a guru. They are under authority. अगर आप पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्रोत से श्रवण करके पूर्ण ज्ञान प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही प्रमाण है कि आपने प्रमाणी गुरु से श्रवण किया है। That he's been accepted by a bona fide guru. कि प्रमाणी गुरु ने उनको स्वीकार किया है। So you have to learn from that, from the guru. You have to do this hearing, surrender and hearing, submissive our reception from bona fide guru. Otherwise, no one can understand it. आपको शरणागत करना होगा और विनीत भाव से श्रवण करना होगा प्रमाणी गुरु से, वरना कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। Do you like this topic? आपको ये विषय पसंद आया? It puts it in perspective, doesn't it? इससे हमें सही दृष्टि दी। I'm not a scholar. मैं कोई I विद्वान don't नहीं, claim to be some kind of scholar. और मैं कोई दावा भी नहीं करता मैं कोई विद्वान हूँ। That would be cheating. ये एक तरह की ठगी होगी। But I was fortunate that I heard properly from perfect source. लेकिन मैं इतना भाग्यवान था कि मैंने सही स्रोत से सही श्रवण किया। I always tell you that's my only asset.
I would not even try to do this. और मैं हमेशा यही कहता हूँ, यही मेरा एकमात्र धन है, वरना ये मैं करने का प्रयास तक नहीं करता। I'm not a scholar. I can't remember anything. मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मुझे कोई बातें याद नहीं रहती। Right? So what am I going to talk about? तो फिर मैं क्या बातें करूँगा? You'd be looking at me. I'd be like, oh, it's like, you know, what am I supposed to talk about? सभी लोग मुझे देखते रहेंगे और मैं सोचता रहूँगा मैं क्या बातें करूँ। Otherwise, you can say, well, this is the meaning of the Sanskrit word. वरना आप ऐसे ही बैठेंगे, इस संस्कृत शब्द का ये अर्थ होता है Uttavad. Oh, yeah, Uttavad. These gurus like this, right? ये सब गुरु ऐसे हैं। You ever see these gurus? अपने ऐसे They गुरु try to देखा act है, like Prabhupada. प्रभुपाद की तरह दिखने का प्रयास करते हैं। Yes, Gyaninath. So Prabhupada said, if you hear very nicely, you'll be a very nice speaker. प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बन सकते So हैं। who can explain it with realization in a simple way for you to understand it, and it has some empowerment to it, convincing you, that is the proof. तो अगर कोई पूरे साक्षात्कार के साथ बहुत सरल भाषा में आपके सामने कोई चीजें प्रस्तुत कर सकता है, तो वही प्रमाण है कि वो सही चीजें बता रहे हैं। The science is the science. विज्ञान हमेशा एक ही होता है। From the time I started preaching to everybody, have I said anything different? जिस समय से मैंने प्रचार करना शुरू किया, उस समय से आज तक मैंने कोई बात अलग बताई है? I thought it was an assassin. मुझे लगा उधर से कोई हत्यारा आया है। Someone's coming in, you know. कोई आ रहा है अंदर। Attempted assassination on M.K. Swami. स्वामी का हत्या करने का कोई Before प्रयास everyone किया। commits suicide, you know. इससे पहले कि कोई आत्महत्या न करे। It's all going on, believe me. ये सब चल रहा है, आप मेरा विश्वास कीजिए। Any other points, questions? कोई अन्य प्रश्न या कोई बात? Mataji, you keep coming back. माता जी आप वापस आ जाती हैं बात Somehow or other. किसी तरीके से। That's not easy. इतना आसान नहीं है ये। Sanatan, do you dare ask a question? क्या आपकी हिम्मत है प्रश्न पूछने की? All right, you look pretty good consciousness. What's your question? अब अच्छी चेतना में लग रहे हैं, क्या है आपका प्रश्न? Hare Krishna. Shri Gurudev. Adam's he's going through World War IV. Forget about World War III. He's in World War IV. एडम जो चौथे विश्व युद्ध से गुजर रहे हैं अभी, तीसरा He's विश्व युद्ध skipped गुजर गया, ahead. उससे अभी आगे निकल चुके हैं। He's looking for the bullet carts right now. बैलगाड़ी ढूंढ रहे हैं। Don't put any firearms around him right now. उनके आसपास कोई हथियार नहीं रखना। No weapons allowed, you कोई know. हथियार यहाँ लाने की अनुमति नहीं है। We have to put mittens on him. You know? उनके हाथों में हमें जो है Like the kid, बांधने you के लिए know. लगाना You चाहिए। can't get into mischief, you know. जैसे यूके में लगाया जाता है बच्चों को, Right. Straight jacket. कि उनको जो है कपड़े पहने जाते हैं ताकि वो बांध कर Insane रखें। asylum. He needs a straight jacket. और इनको जो है पागल खाने में डालना होगा ये कपड़े पहना के। He's so callous to be like, I'm finally warm. और इनका दिमाग अभी ऐसा है कि इनको जब वो कपड़े पहनाएंगे बांधेंगे तो कहेंगे मुझे अभी गर्मी लग रही है, अच्छा लग रहा है। Finally somebody's hugging me. मुझे अब कोई गले लगा रहा है। Oh, that was a burn, man. ये मेरी बात ने इनको जला दिया। That was a burn. ये जला दिया इन्होंने। But what do they say? You know, don't kick the man when he's already down. You know, कहते हैं कि जो आदमी गिर चुका है उसको और लात मत मारिए। right? He's already down on the ground. Like, why kick him? You know? पहले जमीन पे गिर चुका है उसको और लात मारने का क्या फायदा? Sometimes it's like that with Rishi. He's already down on the ground, so like, why kick him? You know, he's already. इसी तरह से होता है, जो पहले जमीन पे गिर चुके थे उनको और क्यों लात मारनी? He's still mad at the people last night who didn't back him up. अभी भी उन लोगों से गुस्सा है जिन लोगों ने रात का साथ नहीं दिया था। When they're sleeping, he's going and shutting all the windows. जब वो Turning up the fan, you know. जब वो लोग सो जाते हैं तो ये जाके उनके कमरे में सारी
खिड़कियां बंद कर देते हैं, पंखे वगैरह बंद कर They're देते हैं। waking up like sweating, you know? जब वो लोग उठते हैं तो देखते हैं पूरे पसीने पसीने हो चुके Off the हैं। fan, you know? किसने पंखा किसने बंद कर दिया? Who shut all the windows? ये सारी खिड़की कौन बंद करके चला गया? Be careful. At night time, watch what he's doing, you तो know? सावधान रहेगा रात के समय, देखिएगा वो क्या करते हैं। He's gonna pay you back. वो आप लोगों से बदला लेने वाले हैं। All right, any last thing? कोई आखिरी चीज? Oh, right, Sanatan. Oh, God, I almost escaped. बच गया था, लगभग बच गया था। Does this sound controversial? क्या ये मैंने बातें विवाद वाली बातें की? It says the truth will set you free. कहते हैं सत्य आपको मुक्त कर देगा। So why should it be? Why is the truth controversial? तो क्यों सत्य विवाद के रूप में सामने आ रहा है? That's an interesting question. ये बहुत दिलचस्प बात है। It should be glorified. It should be, you know, embraced. तो सत्य का तो गुणगान होना चाहिए, इसका गले लगाना चाहिए। Not let's ban him, let's kick them out. You know, this is deviant philosophy. जब प्रतिबंध लगाते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, ये कुछ अलग ही सिद्धांत बताते हैं। It's dangerous. ये बहुत खतरनाक है, Don't listen to it. इनको सुनना नहीं चाहिए। He talks about tattva. वो तत्व की बातें करते हैं, He talks about super soul. परमात्मा की बातें करते हैं। This is not our philosophy. ये सब हमारा सिद्धांत We're नहीं not smart enough to discuss these topics. है। हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं इन विषयों पर चर्चा Just करने के। follow the authority. हम केवल अधिकारियों का Sign पालन your करते हैं। papers, old man. बूढ़े इस कागज में हस्ताक्षर करो, Like a Nazi. जैसे नाज़ी लोग कहते थे। Yeah. You don't want to be a Nazi, do you? आप नाज़ी नहीं बनना चाहते हैं I'll send you with Adam. मैं आपको एडम के साथ भेजूंगा। But now they're hitting on the Russians, you know, so he'll be all confused, you know. लेकिन अब वो लोग जो है रूसियों से नफरत करें तो अब ये थोड़े खुद ही भ्रमित हैं। Well, I'm sorry. Please excuse me. आप मुझे क्षमा कीजिएगा। So, Srila Gurudev, you were explaining that when somebody is praying to Paramatma for purification, and then Krishna arranges. I love it. I quote all the authority, and everyone says, "I was saying," right? Like it all came from me. I'm quoting all the authority he's saying, and then you say, "Well, you were saying like this," and like, you know, I'm just quoting authority. तो कई बार जो है भक्त यहाँ पे मुझसे सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव आप ऐसी बातें बता रहे थे, आपने ये बातें कही थी, तो गुरुदेव बता रहे हैं मैं केवल अधिकारियों की बात कर रहा हूँ और ये अंत में बात मुझे कहते हैं कि आप ऐसा कह रहे थे, मैं तो केवल शास्त्र की बात बता रहा था। This is what I heard. I'm just repeating the same thing. ये मैंने सुना और मैं वही बातों को दोहराने का प्रयास कर रहा I हूँ। heard it. I little understood it. I realized something, and I'm just trying to share the same thing with you. तो मैंने सुना, मैं उसमें से कुछ चीजें समझ पाया और मैंने वही साक्षात्कार किया थोड़ा और मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। Then if somebody is praying to Krishna for purification, then Krishna is making arrangement to meet his representative. You don't have to pray for purification. You just have to pray, let me surrender and serve you with loving devotion. He knows he's got to purify you. Otherwise, how will it happen? तो वो पूछ रहे हैं कि जब कोई परमात्मा से प्रार्थना करता है उन्हें शुद्ध करने के लिए, तो परमात्मा उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं परमात्मा से आपको शुद्धि करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको यही आश्वस्त करने की जरूरत है मैं आपकी शरणागत आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और उनको पता है वो आपको शुद्ध करना होगा क्योंकि उसके बिना आप उनको शरणागत और उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। Purification automatically is part of the process, will come to you. तो शुद्धिकरण ये प्रक्रिया का भाग है, वो अपने आप ही आपके पास आएगा। You have to pray for purification? आपको शुद्धि करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Of course, we have to hear it. अवश्य हमें इसे We श्रवण have करना to होगा accept it. और इसको स्वीकार We करना have to होगा not grumble and complain और about हमें it. शिकायत नहीं करना होगा इसके We पीछे, have to allow ourselves to be humble. और हमें अनुमति देनी होगी स्वयं को विनम्र बनाने के Then लिए, purification will take place. तो शुद्धिकरण होगा। So then when one receives instructions from spiritual master, and then it is said that if one is following those instructions, then one also get purified. So you are saying that like when Krishna is manifesting in that association and that sound vibration goes, then one gets purified actually. So then And then what?
by hearing, by doing submissive oral reception and that sound, transcendental sound vibration going in the heart, then one gets purified. So when one is following, one is trying to follow the instructions of spiritual master, then how that following the instruction? Aren't you listening to your guru? Aren't you following the guru's asking you to do? Aren't you saying what Gurudev is asking me to do? Does that mean you're not listening to the guru? तो प्रभु गुरु प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि हम शुद्धिकरण केवल पा सकते हैं जब हम गुरु से दिव्य शब्द तरंग को श्रवण करें और जब ये हमारे अंदर प्रवेश करें, लेकिन जब कोई गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा होता है तो क्या वो शुद्ध होता है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, जब आप गुरु की बातें सुन रहे होते हैं तो क्या आप उनके निर्देशों को से सहमत नहीं हो रहे होते हैं कि मैं निर्देशों का पालन करना चाहता हूँ? Or you're repeating the same instruction that the guru gave you? और या फिर आप उन्हीं निर्देशों को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं जो गुरुदेव ने आपको दिया? Doesn't that mean that you're hearing Guru's instruction? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु का निर्देश वापस श्रवण कर रहे हैं। What does it mean to preach to yourself? क्या इसका मतलब होता है कि स्वयं को प्रचार कीजिए? So what Gurudev said, what he taught us, then we're preaching to ourselves, we're being reminded of those same things that we heard. तो गुरुदेव ने जो हमें कहा, जो हमें प्रचार किया, वो हम स्वयं को याद दिला के स्वयं को प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। Understand? आप समझ पाए? My Gurudev said, I'm always hearing from my Guru. मेरे गुरुदेव कहा करते थे, मैं सदैव मेरे गुरु से श्रवण करता हूँ। So I'm going, always, he said, you're always whispering in my ear. वो कहते थे सदैव वो मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। That means you're associating with the Guru, remembering them, remembering him, remembering instruction from him. इसका मतलब आप गुरुदेव से संग कर रहे हैं, उनके निर्देशों का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं और गुरुदेव का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। You understand? आप समझ पाए? But without Shravanam and proper Kirtanam, then how you can do Smaranam? तो बिना श्रवणम के और सही कीर्तनम के कैसे आप स्मरण कर पाएंगे? That's why every day Nityam Bhagavata Sevaya. इसे हर दिन कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। So we are repeating the words of Krishna, the words of Guru and Krishna. तो हम कृष्ण के गुरु और कृष्ण के शब्दों को दोहराने का प्रयास करते हैं। Yes, Krishna says like that. Yes, Gurudev taught like that. Yes, Gurudev saying like that. That means you're hearing every day. कि गुरुदेव ने ऐसे बताया था, गुरुदेव ने ऐसे सिखाया था, तो इस तरह से आप हर दिन गुरुदेव की बातों को श्रवण कर रहे हैं। And being reminded of those instructions that you received. और आपको पुनः स्मरण हो रहा है उन निर्देशों का जो आपने प्राप्त किया गुरु से। So how do you say there's no hearing process while you're doing seva? तो आप कैसे कह सकते हैं जब आप सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पे श्रवण नहीं हो रहा? Gurudev said to chant, purify your consciousness, and then do your general instruction and specific instruction. गुरुदेव ने कहा आप जप कीजिए, चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए और अपने सामान्य निर्देश और विशेष निर्देशों को पालन करने का प्रयास कीजिए। Understand? आप समझ पाए? Pray on it. Try to प्रार्थना कीजिए इसके understand. विषय में और समझने का प्रयास कीजिए। It has to be done offenselessly. इसको अपराधों को छोड़कर त्याग करके करना होगा, Otherwise you cannot hear properly. वरना आप सही तरीके से श्रवण नहीं कर The पाएंगे। Guru says chant, and you're chanting, you're trying to give up the offenses, you're doing for pleasure of Guru and Krishna, for own purification. And then the chanting will have a good effect. तो अगर आप गुरुदेव ने आपको जप करने का आदेश दिया है, आप जप करने का प्रयास कर रहे हैं, सारे अपराधों को त्याग करके स्वयं को शुद्ध करने के लिए, गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तब आपके जप में कुछ प्रभाव दिखेगा। General instruction, Gurudev asked me to chant. Be attentive, be sincere in my chanting. गुरुदेव ने मुझे ध्यानपूर्वक सावधानी से जप करने का आदेश दिया है। I want to please Gurudev, I want to please Krishna. और मैं गुरुदेव को सुखी करना चाहता हूँ, कृष्ण को सुखी And करना by चाहता the हूँ। mercy your chanting will have some potency, some effect. तो उनकी कृपा से आपके जप में कुछ प्रभाव दिखेगा और कुछ शक्ति आएगी। So how do you say there's no hearing? तो आप कैसे कह सकते हैं कोई श्रवण नहीं हो रहा? When I'm preaching, all I'm doing is hearing my Guru's instructions. जब मैं प्रचार करता हूँ तो मैं केवल अब मेरे गुरु के निर्देशों को सुन रहा The हूँ whole time. पूरे समय। Everything I'm saying is what I heard from my Guru. So I'm hearing my Guru's instructions while I'm preaching. तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैंने अपने गुरुदेव से श्रवण किया था। जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं मेरे गुरुदेव के निर्देशों को ही श्रवण कर पा रहा हूँ।
I'm being reminded of him and his instructions. तो मुझे उनके और उनके निर्देशों का स्मरण हो रहा है। That means I'm trying to have his association by surrendering to the service. इसका मतलब मैं उनका संग पाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनकी सेवा को शरणागत। And I'm hearing what I need to hear. और मैं वो सुन पा रहा हूँ जो मुझे सुनने की जरूरत है। So how do you say there's no hearing? आप कैसे कह सकते हैं कोई श्रवण नहीं हो रहा? And then what you need to hear, Guru Krishna will allow you to understand it and speak it. और जो आपको सुनने की जरूरत है, गुरु कृष्णा अब आपको अनुमति देंगे वो बोल पाने के लिए और फिर वो सुन पाने के लिए। Right. So Guru Krishna make you speak something you never heard or spoke before. तो गुरु कृष्णा आपसे कुछ ऐसी बातें बुलवाएंगे जो आपने कभी सुने नहीं थी और जो आपने कभी बोली नहीं थी। Then you hear it. और तब फिर आप उसको श्रवण करेंगे। Then you get the benefit of that hearing. तब आपको श्रवण का लाभ भी मिलेगा। Sometimes, but I remember one story. One Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was speaking something मुझे याद very है amazing. भक्तिसिद्धांत सरस्वती कुछ बहुत अद्भुत बातें बता रहे थे। And one disciple, he was also hearing. और एक शिष्य थे वो भी श्रवण कर रहे थे। And then I think was it Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked him, he said, did you write that down? मुझे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने अंत में पूछा कि आपने सारी बातें लिखी? Because Krishna was giving him some amazing thing. कृष्णा उनको कुछ अद्भुत चीजें दे रहे थे। So he wanted to remember what Krishna just made him say. तो वो याद करना चाहते थे उन बातों को कि कृष्णा ने He उनसे क्या wanted बातें to go बुलवाई। deeper in understanding what Krishna just made him say. वो और गहराई से चीजों को समझना चाहते थे कि कृष्णा ने उनसे क्या बातें बुलवाई। So he understanding this is coming from other source. तो वो समझ पाए थे कि किसी और स्रोत से ये आ रहा है। That's what pure value medium means. और यही होता है शुद्ध माध्यम का अर्थ। Just like when Mahaprabhu was trying to get Ramananda Roy to speak more, speak higher, 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 then he's speaking, and then even he's saying, this is not me speaking. तो जैसे महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा आप और ऊंची बातों को धीरे धीरे बताइए, और रामानंद राय समझ रहे थे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान ही मुझसे बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। Because he understood, I never heard it, I never realized it, I never spoke it before. उन्होंने कहा न तो मैंने कभी सुना, न मैंने कभी ये बोला, न कभी मैंने ये साक्षात्कार किया अपने जीवन में। So I'm just realizing, just speaking coming out of my mouth. तो कैसे ये मैं सब साक्षात्कार कर पा रहा हूँ और अपने आप ही मेरे मुंह से ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। Then he said, I'm just like a violin. You're just playing. You're just playing me like a musical instrument. तो उन्होंने कहा आप मुझे किसी संगीत की तरह मुझे बजा रहे हैं। So you're using me as musical instrument, and then some sound is coming out of me. तो आप मुझे बजा रहे हैं किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह और मुझसे कोई शब्द आ रहे हैं बाहर। That's what his realization was. ये उनका साक्षात्कार था। He understood this is you're making me speak these words. I never thought of this. I never heard of it. I never spoke it. So that has to be coming from you. तो वो समझ पाया कि ये बातें मैंने कभी की नहीं है, कभी मैंने साक्षात्कार नहीं किया, कभी मैंने श्रवण नहीं किया, तो ये भगवान ही मुझसे ये बातें बुलवा रहे हैं। That means he's also hearing them. इसका मतलब वो भी उनको श्रवण कर पा रहे हैं। So if that's coming from Krishna, coming to Krishna Parampara, those vibration will purify your consciousness. अगर वो कृष्ण परंपरा से वो शब्द आएंगे तो वो शब्द आपको शुद्ध करेंगे, आपकी चेतना को। That's why I said, preach for your own purification. इसलिए मैं कहता हूँ स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रचार कीजिए। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Preaching for your own purification means you want to come in contact with Shabda Brahma, with the pure holy name, with the Hari-katha Krishna-katha, for your own purification. You want that association. तो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रचार कीजिए। इसका मतलब हरि कथा कृष्ण कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से आप कृष्णा का संग करके स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। Otherwise, why Krishna is just not doing it automatically inside? वरना क्यों कृष्णा खुद से ही भीतर से सारा शुद्धिकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? He coming outside through the ear, then going back inside. वो कानों के माध्यम से फिर से वापस भीतर प्रवेश करते हैं। So it's interesting, isn't it? It's coming from the heart, through the mouth, around into the ear, and then back into the heart. तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि कृष्ण हृदय से बाहर आते हैं, मुख से बाहर आते हुए, फिर घूमते हुए कानों से भीतर प्रवेश करते हैं, वापस हृदय में जाकर फिर शुद्ध करते हैं। Right? That's why you also have to hear it. इसलिए आपको भी ये सुनने की जरूरत है। That's Krishna in the form of transcendental sound vibration. वो कृष्ण है जो उस दिव्य शब्द तरंग के माध्यम से बोल रहे हैं। So the guru is also hearing. तो गुरु भी श्रवण कर रहे हैं।
He's hearing what Krishna is making him say, and that vibration is also purifying him as well. और वो सुन रहे हैं कि कृष्णा उनसे क्या बातें बुलवा रहे हैं और फिर वो शब्द उनको भी शुद्ध कर रहा है. That's what it means. I'm preaching for my own purification. That's what it means. इसलिए कहते हैं कि मैं स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रचार कर रहा हूँ. इसका Everything is based on sound vibration. ये सभी कुछ शब्द ध्वनि शब्द तरंग पे निर्भर है. Otherwise, why we're chanting loudly when we're chanting japa? वरना क्यों हम जब जप करते हैं तो हम थोड़े जोर से जप करते हैं? Because we want the sound vibration to go into the ear. क्योंकि हम चाहते हैं वो शब्द हमारे कानों में प्रवेश करें. That's where Krishna is manifesting, in the sound. कृष्णा उस शब्द में प्रकट होते हैं. That's why it says that the mercy of Krishna through the Guru is not received through any other part of your body except the ear. इसलिए कहते हैं कृष्ण की कृपा जो गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है आपको शरीर के किसी अन्य भाग से नहीं केवल कान से प्राप्त होती है. So Krishna inside wants to purify you, then he'll give you pure biomedium in order to hear transcendental sound, and that vibration is non-different from Krishna. That's what will purify all the material contamination. तो जब कृष्ण आपको शुद्ध करना चाहते हैं तो अपने शुद्ध माध्यम को भेजते हैं और वो दिव्य शब्द के माध्यम से वो शब्द जब आपके अंदर प्रवेश करते हैं तो वो आपको चेतना को शुद्ध करता है. That's why the intelligence is where to go to, who to hear from. इसलिए जो बुद्धि आपको मिलती है कि कहाँ जाके आपको श्रवण करना है. So if you really want to hear from Krishna, Krishna will send where he's really manifesting and speaking. तो अगर आप असल में कृष्ण को सुनना चाहते हैं तो कृष्ण आपको वहाँ जाने की बुद्धि देंगे कि जहाँ वो प्रकट होकर बात कर रहे हैं. If you don't really want to hear from Krishna, I said yesterday, why will he send you to a purifier medium? अगर आप असल में कृष्ण को सुनना नहीं चाहते हैं तो कल हम बात कर रहे थे क्यों आपके पास एक शुद्ध माध्यम को भेजेंगे. If you don't really want to hear, then why you need a purifier medium? अगर आप असल में सुनना नहीं चाहते हैं तो आपको शुद्ध माध्यम की क्या जरूरत है. When you really want to hear, then he give you bona fide guru, purifier medium. जब असल में आप सुनना चाहते हैं तो वो आपको प्रमाणिक गुरु देंगे शुद्ध माध्यम. And then he'll speak through the guru, and that vibration will purify your consciousness, your mind, your senses. और वो उस गुरु के माध्यम से बात करेंगे और वो शब्द आपके मन और आपकी चेतना को शुद्ध कर And देगा. then once your mind and senses is purified, then that katha will enter inside of you. और एक बार जब आपका मन और चेतना शुद्ध हो जाए तो वो कथा आपके अंदर प्रवेश करेगी. You can say it's like the soul is like really skinny, very small, atomic. कैसे कह सकते हैं कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, एक अणु के समान है और बहुत ही दुर्बल है. And the Hari-katha Krishna-katha is the Shabda Brahma. It's called Swarup Shakti. और ये हरि कथा कृष्ण कथा ये शब्द ब्रह्म इसको कहते हैं स्वरूप शक्ति. So when that Swarup Shakti comes in and goes into your soul, then your soul starts to grow. That's what it means, food for your soul. तो जब ये स्वरूप शक्ति आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में आत्मा के अंदर पहुंचती है तो ये आत्मा का भोजन होता है. इससे आत्मा धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है. So as the soul is growing out, then the material body coverings are getting smaller. तो जैसे जैसे ये आत्मा बड़ा होने लगता है तो ये बाहरी आवरण भौतिक शरीर जो है ये कम होने लगता है. So that's how you develop spiritual body. इस तरह से एक आध्यात्मिक शरीर आप विकसित करते हैं. That's how the body becomes spiritualized. और तब जो शरीर है वो आध्यात्मिक हो जाता है. So as long as you get the Shabda Brahma, you get the Swarup Shakti, means the food for your soul, then your soul will get stronger and stronger and more bigger, and then all this gross and subtle thing will start to become shrunken. तो जैसे ये आत्मा को दिव्य शब्द ब्रह्म मिलते हैं, Dissolve. Let's say dissolve. स्वरूप शक्ति मिलती है, आत्मा को भोजन मिलना शुरू होता है, आत्मा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है. तो वैसे वैसे ये भौतिक स्थूल शरीर जो है ये धीरे धीरे कम छोटा होने लगता है और कह सकते हैं कि ये विलुप्त हो जाता है. Makes sense? इसका मतलब बनता है. That's what I heard. That's what I'm telling you. ये मैंने सुना और ये मैं आपको बता रहा हूँ. I hope it helps you. मुझे उम्मीद है आपकी कुछ मदद हुई होगी. It helped me. इसने मेरी मदद की. Many times when my Gurudev would speak, he would say, he would thank everybody. कई बार मेरे गुरुदेव जब कथा करते थे उसके बाद अंत में सभी को धन्यवाद करते थे. And then he would say, I feel much benefited by this association and by this katha. वो कहते थे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला आपके संग से और इस कथा के माध्यम से. So he would thank us for that. वो हमें धन्यवाद करते थे. But he could feel much benefited by hearing that same katha. क्योंकि वो स्वयं बहुत ज़्यादा लाभ देख पा रहे थे उस कथा को बोलने के बाद. And then he would say, I hope you also
got some benefit as well. और वो कहते थे मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you everyone, Hare Krishna. We didn't hear the baby. आज मैंने बच्चे को सुना नहीं Because with the father. क्योंकि आज पिताजी के साथ